Hello and welcome back to Chasing the Target. Happy New Year to all our viewers and everybody. Happy New Year's to my co-host Fez. Hope everyone had a good and safe New Year's and all the best for the coming year in 2023. It's a new year, different day, but the cricket is always on and we're always going to be discussing cricket. Fez, how are you doing, man? I'm doing good. Happy New Year to you as well, and everybody who hopefully going to watch us and watching us, and will keep watching us throughout the year. This year looks to be filled with a lot of cricket, a lot of exciting cricket, and hopefully it brings us happiness and to everyone else. Yeah, I mean, start of the year already, there's a lot of news in terms of cricketing terms. So let's go into fresh off the press and discuss that. So a lot of people were celebrating New Year's in different places. There was a lot of cricketers celebrating with Fez in Dubai, in different areas. But yeah, Rohit Sharma had to probably celebrate in Bombay because today there was a meeting, a BCCI review meeting where Rahul Dravid was present, Lakshman was present, Rohit Sharma, plus a lot of BCCI designatories were there as well. So from that meeting, there were three things mainly that were discussed. That was workload management, fitness, and availability. And the BCCI clearly have said, "Ki bhai, now that if you want to take rest, you take rest in the IPL. You can't take rest in India matches. You can't be dropping series and picking which series you want to play because it was in the players' hands. They were requesting to rest out in particular bilaterals, in particular tours. But now that cannot happen. Now it's up to the player. I still don't think that the player will leave with the IPL, and I don't know how it will work. But it'll be simple. I think that okay, fine. अगर आप नहीं खेल रहे हैं ये tour thing, you'll be dropped and you might not even make the next series. I think they're going to be tougher now. But yeah, Faiz, your initial thoughts with these three topics discussed and the outcome of this meeting. Yeah, 100% was an important meeting to do with like the start of the year, considering that what year lies ahead of us. We have bilaterals coming up with not small teams. We have Australia, we have the New Zealand as well. We have Sri Lanka immediately. Then we have the IPL. Then we have mid में कौन तो I think South Africa कोई आ जाते हैं अभी तो schedule आएगा. And then you have the World Cup, right? So I think fitness is one key factor that we'll have to see. Availability of the players. Players cannot afford to go and get injured in like a I would say less important IPL this year, considering what's at stake in October. So I think that was also okay. I think one more thing that was discussed was the assessment of the T20 World Cup. There were a lot of people who put through their hats into getting involved in the selection committee. I think Nayan Mungia was amongst them as well. Former cricketer Venkatesh Prasad as well wanted to join the committee. So I think that is also going to be discussed. But yeah, man, if BCCI is taking such firm steps, अगर उन लोगों के ये temperament शुरू से अगर नजर में आ रही है, आई जस्ट होप दिस नॉट के मीडिया के लिए कर रहे हैं, लोगों को ठंडा करने के लिए करें, पर अगर ये स्टेप फर्मर है जैसा आप बोले कि they'll be stricter, then I'm very happy with this actually. Yeah, and the fact that they said openly कि भाई अगर आपको रेस्ट करना IPL में कर लो, that's a big statement. And because if the big player doesn't play in the IPL, it does impact the BCCI also because the broadcasting rights, TV rights, everything indirectly it does impact the BCCI. So if they're saying कि भाई आप वहाँ पे रेस्ट कर लो, that means they're very serious now. I think there's a lot of criticism and it's been a poor year last year, for Indian cricket. So they have to take some strong stands, and that's exactly what they're trying to do. And one more thing is that the yo-yo test is back. You're a fitness freak. You enjoy the fitness. So now the yo-yo test will be taken into account, and you'll have to do that if you want to get into the team. The 2K run which they had before, they've abolished all that, and now if yo-yo test will be the barometer of fitness, and that's what they're going to look at. They've brought in that test, and every player will have to go through that if they want to be selected for the Indian team. So how do you look at that? Yeah, the yo-yo test is basically it'll test your endurance, how much you have in your capacity कितनी, and I'm pretty sure considering this team right now, a lot of people will fail because आपको continuously भागना पड़ता till exhaustion. Basically markers लगाते थे हाँ, एक एक जगह 20 मीटर sprints मारना पड़ता आपको. मैं You यही keep पूछने वाला था। अगर जो करंट T20 जो स्क्वाड था लास्ट, आई मीन नॉट करंट, जो लास्ट वर्ल्ड कप का स्क्वाड था, उसमें से कौन पास करते थे? लाइक इट वुड हैव बीन Virat वेरी Kohli, Virat Kohli. I would probably say Surya Kumar Yadav as well because he doesn't seem to be fit, but he has the temperament to at least get through it. Then who else? Rohit Sharma. Nahi, I don't think. Yeah, Hardik Pandya was injured. I don't think even Hardik Pandya would get through it.
So yeah, it's very minimal number of people in the squad that would have gotten through. But yeah, this yo-yo test system is very good. If you noticed, even in the World Cup 2022 Qatar, mein, jab England were in Qatar initially, they were doing these tests. So Southgate made them run till exhaustion and play till exhaustion to adapt to the conditions and resistance. फेफड़ों में जगह बनाने की रहती, तो आपकी हाँ लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपको एंड्योरेंस रहता है, आपको गेम लॉन्गर आप लास्ट कर सकते हैं. हाँ जी बिल्कुल yeah and that will be a strict barometer and they'll have to pass that and I think it's good because you know it means कि आज जो half injured players है या वो है they're not going to be selected even if you're a talented player because you know क्या हो रहा था पहले बोल रहे थे कि यार talent है you know उसको खिला दो cricket का fitness थोड़ा अलग रहता है it's okay but what was happening is people were getting picked on talent but then they were not fit enough to last a tournament they were not fit enough to last a series and that's why this had to be implemented back ये जो yo-yo test है बिकॉज क्या हो रहा था लाइक अगर आप देखें यू नो हाँ अच्छे अच्छे प्लेयर को पिक कर रहे थे लेकिन वो फिर यू नो ही वुडंट बी एबल टू कंप्लीट अ सीरीज पर उसका क्या फायदा यू नीड टू बी फुली फिट यू नीड टू हैव स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स एंड देन फ्रॉम देयर you go and you play a series or you go on a tour or you go to a world cup fully fit and you have your 15 you know the squad of 15 जो सब fit है and everyone's passed this test and you take it from there I feel सबसे बड़ी चीज मुझे आई थिंक इसमें ये होने वाली है विच आई होप दिस इज इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेड इसके भाई ये जो बिग प्लेयर्स है एकदम से फिर उनको अब जैसे लेट्स से अब नहीं कर पास बीप टेस्ट राइट बीप टेस्ट ही होता है मतलब वन बीप टू अनदर बीप दे हैव टू रन इन oh दैट I've done the bleep test yo-yo Yeah, test is yeah, that that yo-yo test is basically like the beep test. So they'll put one beep, you run that cricket pitch, and then वो till the next खतरनाक beep. रहता हालत में हाँ, मैं तो लाइक 2-3 ब्लिप्स के बाद जाके साइड में जूस वूस पी लेता हाँ, रहता है इट्स तो नॉट वो इजी बीप दैट टेस्ट है बेसिकली आपको जो जिम क्लास में होता था वही है वो. हाँ हाँ तो टेस्ट योर एंड्योरेंस तो वो अगर ये इम्प्लीमेंटेशन ये होना चाहिए कि भाई अगर बंदे नहीं पास कर रहे अब जो रांची के बच्चे अच्छे खेल रहे इन लोगों को लाके इम्प्लीमेंट करो स्क्वाड में ये आई थिंक ये भी ये नहीं होना कि बिग बॉयज हैं तो बिग बॉयज को ही खिला लो चलो ठीक है अगर वो नहीं कर रहा बीप टेस्ट पास तो भी उसको खिला रहे वो चीज जरा तो फिर सवाल सिस्टमेटाइज नहीं करना उठेंगे पड़ेगा. क्या फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा को बिठा दिए और यू नो लाइक यंग रणजी प्लेयर को लेके आ गए फिर सवाल तो उठेंगे कि भाई इन्हें खाली फिटनेस पे लेके आ गए ही डजंट हैव द टेम्परामेंट ये वो फिर बातें शुरू होती दैट्स द थिंग अब यू नो वो बट फिर भाई मेसी अगर ने आप रोहित शर्मा जिस तरीके का स्टैचर का चल रहा है अभी इस तरीके का उसका क्या रहा है टेम्परामेंट इट डजंट लुक लाइक ही इज गोइंग टू पास द पीप टेस्ट राइट एंड ही इज 34 35 राइट एंड 36 समथिंग तो अभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर देन एंड इफ ही फेल्स द पीप टेस्ट आप उसका टेस्ट वो कर रहे हो छुपा रहे हो देन फिर पॉइंट क्या है वो सब चीजों का यार फिर वही होता रहता है कि भाई फिर सिस्टमेटाइज होएगा ही नहीं है चीज तो मैं वही कि भाई इम्प्लीमेंटेशन मतलब या तो जो बायलैटरल में टीम खेल रही है लेट देम प्ले इफ देयर पासिंग दैट टेस्ट डोंट ऐड एनीवन फ्रेश वैसा भी हो सकता है मे बी दैट इज अनदर वे टू लुक एट इट बट ये है कि इट शुड जस्ट बी डन इन अ वेरी प्रॉपर मैनर. अब मेरे को ये बोलो अवेलेबिलिटी की बात हुई है उन लोग तो बोल दिया कि भाई आप वहां पे रेस्ट ले लो मगर प्लेयर रेस्ट लेंगे आईपीएल में आप ये मेरे को बताओ फॉर एग्जांपल यू नो अब वर्ल्ड कप आ रहा है अक्टूबर में you know if Mumbai Indians you know they get to the round of the semi-finals the playoffs but then Bumrah has a slight niggle he can still play but he has a slight niggle will he say कि भाई मैं playoff नहीं खेल रहा हूँ because मेरे को वर्ल्ड कप भी देखना है सब देखना है or will they continue to play like they've done? Because it's still not in the BCC's hands. Yeah, Lakshman has the power, I think. Now he has more power because he's the head of the NCA. He can say, "Ki bhai rest kar lo ye wo." But still, I think it's the kind of player's choice. Will he be able to say, "Ki nahi, bhai, मैं नहीं खेलना, मैं rest ले रहा हूँ." मेरे हिसाब से अगर मैं जसप्रीत बुमराह हूँ और मेरे को निगल होता है राइट अगर मैं अपना तरीके में सोच रहा हूँ which is not going to be probably what Jasprit Bumrah and then I have a week later had the test championship at the Oval वो Yeah. तरीके से सोचना पड़ेगा the bigger picture if the players start to think about the bigger picture you will definitely अब I get it Mumbai Indians का pressure होगा there will be but I think Bumrah has to understand what is ahead of him in terms of two major trophies not just one two that's अगर फिर आपको कॉल आया अंबानी से और बोल के कि भाई आपको खेलना ही खेलना है नहीं तो नेक्स्ट ईयर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं तो या कोई आप बात अब नहीं है भाई बुमराह को क्या डर है possible. बुमराह के जैसे वैल्यू के प्लेयर अंबानी बुमराह को कॉल अंबानी से भाई मैं क्या कर आपकी टीम के लिए बोले पलटा के रख देता विदाउट बुमराह मुंबई इंडियंस वोंट हैव वन एनीथिंग without Rohit Sharma, they won't have one. So players need to understand their value, and I think that's the high time.
But कि maybe आप the amount of money at stake and whatever is at stake over there is so much that they can't take that decision. That's why they haven't Yeah, see, taken as it. a player, either do this, you play out the IPL. अब देखो, now if you ask रोहित शर्मा, जो जसप्रीत बुमराह को, आप immediately आके भाई आप खेलोगे क्या अगर ऐसा सिचुएशन आएगा, आप जो सवाल करे, जाके पूछेंगे आप ये करेंगे क्या, will you take a rest? वो लोग बोलेंगे भाई आने तो दो IPL, like I can't think that far ahead. वो diplomat. Once the IPL will pan out, they'll understand the situation. अब on that day, ideally they shouldn't, if they're having injuries and they're not able to carry forward, they need to respect national duty because this is still a domestic league. I know it's IPL, I know it's prestigious, but again, there is the a number of people at commercials and advertisers and they all bank on this part. But as a sportsman, you need to understand your longevity. You don't have to care about this. This is temporary. अगले साल फिर IPL आ जाएगा. World Cup, World Test Championship is not going to come every year. Well, it will, but like you coming in the final. एंड जो भी हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. जो भी आपके सवाल है कमेंट से प्लीज आप भेजते रहिए कमेंट सेक्शन में. योर लव एंड सपोर्ट रियली मीन्स अ लॉट टू अस. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. रियली अप्रिशिएट दैट. एंड अनदर थिंग फैज, मेरे को ये समझ में आ रहा है कि भाई दैट मीन्स सब अवेलेबल थे T20 और वनडे सीरीज के लिए सिलेक्शन के लिए फॉर दिस श्रीलंका सीरीज. ठीक है, दैट मीन्स कि दे आर गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन बिकॉज दैट मीन्स विराट कोहली, रोहित शर्मा, राहुल ऑल्सो were available for selection for the T20s. So that means ki drop hue. They didn't get picked. From what I can understand from the different sources that I've read, that I've watched and everything, what I can the conclusion that I gather is ki bhai, because of this new system and everything, everybody gave their availability. So bole ki bhai hum khelenge agar aap bole to. Magar the selectors have chosen to go on this path, given Hardik Pandya the role. Ab wo khulla announce nahi kare shayad ki bhai he's going to be your permanent captain or whatever, but it looks like ये यही दिशा में जा रहे कि भाई यंग कैप्टन रहेगा और ये यंग टीम रहेंगी एंड फिर वनडेज में आपके दूसरे प्लेयर खेलने वाले हैं, बड़े प्लेयर. या मेरे हिसाब से आई थिंक सही रास्ता है ये चुनने का एंड आई थिंक पीपल शुड रिस्पेक्ट बिकॉज देखो अगर अपन 2024 की बात करें T20 वर्ल्ड कप के एक साल ही बाकी है राइट एंड अगर एक साल के हिसाब से टीम को एक कोर बना दे रहे जो धोनी के टाइम पे करे थे कि एक कोर टीम बना देना चाहिए for a T20 or for an ODI format. Now they're finally segregating the templates. It's a different T20 template, it's a different day. So they're doing what England is doing in a certain way. कि भाई ये वाली टीम मेरी ODI हो जाएगी, ये वाली मेरी T20. Like you said in the previous episode, आप बोले थे कि एक आध प्लेयर फिट कर सकते हैं subject to fitness and availability. Now the biggest thing मेरे को जो ये चीज में दिख रही है सेलेक्टर्स का रिवैम्प. यू कैन से कितने सेलेक्टर्स अभी आने वाले हैं, अभी कितने लोग अपॉइंटमेंट डालें. चेतन शर्मा रीअप्लाई करे, वेंकटेश प्रसाद आने वाले हैं, नयान मुंगिया आने वाले हैं. There's also a panel that is going to select them. So even from the selectors to the player, सबकी चॉप हो रही, सब is getting changed. एंड Everything is सेलेक्टर्स को स्ट्रांग होना पड़ेगा. मतलब दे कांट बिकॉज बीच में 3-4 साल में इट लुक लाइक द प्लेयर्स आर स्ट्रॉन्गर देन द सेलेक्टर्स. दे फेल्ट लाइक exactly the coach, the exactly. management, the players were stronger than the selectors. Now the selectors have to take tough calls, and then it's the captain and coach's job to run that team. But the selectors have to take that tough call. तो मैं ये मान लूं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल ड्रॉप हुए T20 सीरीज से. मैं अभी भी वही बोलूंगा कि ड्रॉप मे बी रोहित शर्मा फिटनेस की वजह से ड्रॉप हुआ होगा, केएल राहुल शादी की वजह से ड्रॉप हुआ होगा. दैट्स टू मगर शादी की ये जो बात हुई, उन्हें पूछा रेस्ट न्यूजीलैंड सीरीज के लिए, नॉट इन द श्रीलंका सीरीज. ही वाज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन इन द श्रीलंका सीरीज. केएल राहुल को अगर ड्रॉप भी करे तो उसमें कोई हर्ज नहीं बिकॉज दे बेस्ड ऑन फॉर्म. विराट कोहली को मैं अभी भी बोलूंगा कि ड्रॉप नहीं करा मगर होगा ड्रॉप बिकॉज का ये मतलब नहीं है कि उन लोग वापस नहीं आएंगे T20 हाँ टीम में. 100% वो तो भाई मगर विराट कोहली ड्रॉप का का ये मतलब है कि ड्रॉप हुए, आप अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलग आप रास्ता पकड़ रहे हैं. वही तो है राइट बात ड्रॉप का. Now, अगर वो ड्रॉप नहीं करा, या तो आप ड्रॉप बोल सकते हैं या तो आप एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं. एक्सपेरिमेंट इन अ ड्रॉप ही अब यंगर देखो, यंगर I know they didn't want to use those words, and in हाँ particular they डिप्लोमेसी didn't give us this. We're having this debate because we didn't get the clarification. मेरे को तो राइट. clarification नहीं मिला कि ड्रॉप हुआ है नहीं हुए. लेकिन from what I can understand is कि भाई ड्रॉप हुए, अगर ये नहीं चली टीम या जो भी है, फिर इन लोग को वापस लेके आएंगे, एक के बाद एक लेके आएंगे. मगर लेकिन अभी फिलहाल वनडे पे फोकस है, T20 पे उतना नहीं है. और ये T20 में जो है यही आपकी स्क्वाड है और यही चलते रहेंगे जब तक
या आई थिंक दैट्स अ फेयर कंक्लूजन बिकॉज देखो अगर वनडे पे भी फोकस है एंड अगर जो टीम वनडे में है मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम द T20 आर इन द वनडे एंड एक वही है ना भाई 50 ओवर फोकस रखो सीनियर प्लेयर्स को बोल रहे डोंट कीप 2020 एज मेन फ्रेम 2020 फॉर अ सीनियर प्लेयर ही कैन कम अप इन द IPL एंड मेक इट अप दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी एंड फिटनेस एंड व्हाटएवर नाउ फॉर T20 50 ओवर वर्ल्ड कप अभी वही फोकस रखो बोल रहे हैं ये यंगर टीम को एक बूस्ट दे रहे जितने भी पब्लिक में नाराज थे जितने भी नाम हम सुन रहे थे रांची ऋतुराज ले लो त्रिपाठी ले लो इन लोगों को भी एक मौका मिल गया तो आई थिंक वही है कि भाई सबको खुश भी कर दे रहे हैं एट द सेम टाइम एंड मेन फोकल पॉइंट विल बी द 50 ओवर वर्ल्ड कप 2020 स्लोली विद टाइम इट विल कम टू टर्म्स के भाई क्या कौन ड्रॉप हो रहे कौन क्या हो रहे और अब ऐसा नहीं होगा कि भाई अब मैं ये सीरीज में नहीं खेलूंगा वो पूरे सीरीज खेलना है नहीं लाइक जो जो भी सीरीज है वही आपको मैं बोल रहा था आपको वही मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज द सिस्टम जो इन लोग प्लेस कर रहे इट शुड बी दैट इम्पैक्टफुल के भाई लोग फट के खेलना डर के खेलना अरे भाई मेरे निकल जाएंगे भाई अरे मेरे को निकाल देंगे अरे भाई मेरे को ये कर देंगे ये सिस्टम ऐसा ठोकना भाई आपको ऑन योर टोज रखना ऑन योर टोज अगर आप नहीं आप रोहित शर्मा रहने दो आप विराट कोहली पैकअप भाई पैकअप कट इट यार कट इट ये सीन रहना पड़ता ये नहीं कि भाई अब रांची में वो बंदा 6-8 सेंचुरीज मारते जा रहे हैं लोग उसकी नाम पुकार रहे कौन है वो कौन है वो एंड देन कोई आ ही नहीं रहा फिर ना वो चीज होना चाहिए कि इवन दे शुड गेट स्कैर्ड ऑफ देयर प्लेस इवन दीस गाइस शुड गेट स्कैर्ड ऑफ दिस प्लेस भाई भूवी किसी फॉर्मेट पे पिक होंगे या नहीं अंशुल भाई जुड़ गए हमारे साथ थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लग रहा अभी पिक होंगे लेकिन बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड यू सीन द हिस्टोरिक नेचर ऑफ इंडियन सिलेक्शंस जो दे बैंक ऑन एक्सपीरियंस प्लेयर्स ही विल ऑलवेज हैव अ चांस फॉर दैट वनडे वर्ल्ड कप आई फील अंटिल वी गेट क्लोजर टू द थिंग मैं बता नहीं सकता हाँ या ना लेकिन मुझे अभी तो नहीं दिख रहा कि भूवी पिक होने वाले हैं किसी फॉर्मेट में टेस्ट में तो बहुत टाइम हो गया उनको खेल के और अगर आप T20 देखे उनको चांस मिला ही गॉट अ रन लास्ट ईयर एंड ही डिडंट लिव अप टू दोस एक्सपेक्टेशंस ठीक है पावर प्ले में जबरदस्त था मगर डेथ ओवर्स में आपको इशू दिखा एंड पर्टिकुलरली आप इंग्लैंड का गेम उठा लो सेमीफाइनल क्रूशियल स्टेज उसका परफॉर्मेंस वो लेवल का परफॉर्मेंस नहीं था व्हिच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम भुवनेश्वर कुमार तो अनलेस ही हैज सम डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस IPL परफॉर्मेंसेस आई डोंट नो कभी किसी को आप ये नहीं बोल सकते किसी चांस ही नहीं है किसी को भी चांस मिल सकता है और आप देखें द ट्रेडिशनल इंडियन सिलेक्शंस दिनेश कार्तिक वापस आ गया वापस आ गया उन्हें वापस आ गया तो भूवी ऑलवेज हैज अ चांस इन दैट लेकिन फॉर नाउ आई डोंट थिंक ही विल बी पिक्ड इन फॉर्मेट्स दे विल गो विद द young bowling unit and if they want experience they can always fall back on Shami and Bumrah that's what they will do I feel and with Harshal Patel coming to the front Arshdeep Umran Malik they will probably focusing on these more bowlers also और एक चीज बस यही लाइन पे मैं बोलना था आपको कि they have to play now Ranchi domestic the youngsters ये जो आके IPL में 3-4 ओवर डाल के खतरनाक विकेट्स लेते हैं या और you have Badoni coming and smashing it then you don't see them in domestic ऐसा नहीं चलेगा if you want to get selected for the Indian team you have to play Ranchi you have to play Saeed Mushtaq Ali you have to play all this is what it was said in the meeting as well तो आप खाली purely based on IPL आप नहीं आ सकते That is very good to know because देखो भाई वही एक unfair opportunity like I've said selection criteria हमारी हमेशा IPL रही है IPL में जो नाम जब बढ़ता है वही बिकता है जो अपने पास बोलते हैं that was what it was but अगर ऐसा सैयद मुश्ताक अली खेल रहे विजय हजारे खेल रहे and first class cricket आप खेल रहे then it will be an amazing thing to see and that will make it more interesting as a Ranchi unit you will also want to go and watch those matches right that is how you increase ग्राउंड में कैपेसिटी जरा क्राउड आके भी देखेंगे अरे कौन से बच्चे क्या खेल रहे एक IPL ही आता है एक IPL ही देख देख फिर IPL से पिक हो जाता है अब मैं भुवनेश्वर के ऊपर ये बोलना था आई डोंट सी हिम कमिंग बैक इनटू द टीम ऑनेस्टली बेस्ड ऑन एज एंड इंजरीज दैट ही हैड इन द फ्यू इयर्स 2020 इज द ओनली फॉर्मेट दैट आई कुड सी हिम कम बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस बट जब मुकेश कुमार है मोहसिन खान है आवेश खान है कितने फास्ट बॉलर्स अभी हैं इन दैट बैटल विद हिम and they are playing much more consistent cricket than भुवनेश्वर कुमार अगर आप देख रहे हैं इंजरी के बेसिस पे बोल रहा हूँ तो then it looks like बहुत और मुश्किल हो जा रहा है उन्हें अपने लिए कर ले रहा अगर उन्हें जैसा IPL एक जबरदस्त शाइन कर लिया and but then someone in the Ranji अब वहाँ पे conflict of interest की बात then it will be again the same story तो पूरा मेरे लिए Bhuvneshwar का ये है what he has with him is he has like a proper portfolio and he has the experience so he has that in the bag लेकिन I don't feel like I agree with you you already have Bumrah there you have the option of Shami if you need experience and then you go with your younger bowlers Mukesh Kumar ले लो आप Siraj ले लो जो भी है like you Arshdeep and also what's his name Umran Malik these are your options I think and you'll have to back them also it's said कि 20 खिलाड़ी लेंगे उन लोग one day squad के लिए 20 खिलाड़ी अभी like initially they're going to pick 20 and they're going to play them throughout the year
this is what I've heard from the meeting. I don't know kitna accurate ye baat hai, lekin matlab 20, they'll have 20 players in mind. These are going to be your Mixing pool for around the, a mixed match. Yeah. yeah, they'll be your pool for the World Cup. Of course, you can't. I think you can only pick 15 or 16 in the World Cup. लेकिन you'll have ये 20 खिलाड़ी और ये throughout खेलेंगे साल until the World Cup. फिर आप वो pool से pick करेंगे. Does that limit your options a bit, or do you feel that अच्छा, okay, at least you have that flexibility of 4 or 5 players that you can pick and drop? नहीं, I would say 20 is a decent amount of squad. Is अगर अपन फुटबॉल के कॉन्टेक्स्ट में दे रहे, you got your subs and your reserves, right? तो I think वैसा kind of a situation है यहाँ पे भी कि आपके एक substitute भी हो गया, एक reserve में भी हो गया अगर कोई injure हो गया. But the main thing over here is team chemistry. Team chemistry एक बार set होगी 20 में तो बहुत ज्यादा effective होती है. अब आप ऑस्ट्रेलिया को ही देख लो टेस्ट में, कितने उन लोग की वही टीम हमेशा खेलती रहती है. एंड वो लाबोशेन स्मिथ और ट्रैविस हेड की जो केमिस्ट्री है, उस्मान ख्वाजा, द पोलर्स, पैट कमिंस, स्टार्क, इन लोगों की एक अलग केमिस्ट्री. सो दे आर ऑलवेज ऑन अ हाई. दे ऑलवेज इट्स अ यूनिटी. एक यूनिट बोलते हैं, एक टीम का एक एक पैक्ट हो जाता है, एक वुल्फ पैक हो जाता है. सो दैट इज व्हाई आई फील कि भाई इट इज अ गुड कॉल कि आप 20 मैन ही रखो, नो प्रॉब्लम भाई. आई गेट इट कि हाँ भाई रांची में अगर कोई हल्ला मचा रहा है, देन मे बी यू सब्स्टिट्यूट दोस रिजर्व्स व्हिच यू फील आर Yeah, नॉट and दैट injuries great. also might force you to go out of the 20. Exactly. But this 20, keep it up packed and keep it together. That is the main thing. Ibrahim bhai, ye बोले they've shortlisted 20 Yeah. players for ODI who they will rotate under the World Cup. And Faz said, the advantage of this ki bhai, you build that chemistry among the 20 players. They start playing with each other, they're familiar, with each other. Itna chopping changing nahi rehta. And then when you come to the big stage, you already familiar ki bhai iske kya strengths weaknesses hai, and you start playing as a unit. You understand each other. The communication is clear, and it makes it easier going into the World Cup. So that's the positive side of it. The negative side could be ki bhai jo कहीं और बाहर मार रहा है डोमेस्टिक में या आईपीएल में मार रहा है, उसको चांस नहीं मिलेगा. Like it will be difficult for him to break through, but you can't have advantages all the time. But that is what the national team is about. It's not supposed to be that easy to get into the Indian cricket team, right? It's supposed to be a very hard job. अभी आजकल IPL के through अपन कितनों को देख लिया on this podium of the Indian cricket team who are maybe not even like supposed to play, right? But अभी with this context, people will have to work harder, drill themselves harder, probably perform more consistently. एक आध दो centuries is not enough even in a Mustaq Ali or Vijay Hazare. You have to get through that gate of the Indian cricket team, and मजाक नहीं है वो. Yeah, no, 100%. It shouldn't be that easy to get into the team. And also, in a way, it could be like, it could put pressure on players who are not performing to, like, get their act together and everything, because they'll keep getting chances. And if they're not performing, they'll be out of the 15 and, into that 20. So Yeah. it'll put them on their toes in that way. ये सब बातों के बातें हैं, like how it's going to be implemented, what actually will be the good effects, what will be the side effects, we'll only know as the time goes on. कुलदीप एंड चहल को एक साथ लाना होगा ओडिया में. मेरे हिसाब से ये बात सही है, मगर वो लेके आएंगे नहीं आएंगे मुझे पता नहीं, बिकॉज ये फैसिनेशन हो गया कि यू नीड बॉलर्स हु कैन बैट. आई नो कुलदीप हैज अ 40 इन द टेस्ट मैच रिसेंटली, लेकिन समवन लाइक सुंदर अक्षर पटेल in this system always might have an advantage. But I feel you need to play 2 leg spinners, and these are your perfect 2 right now. But also Bishnoi, I think Bishnoi को भी लेके आना चाहिए. Bishnoi इतना अच्छा डाला, मैं उसको लाइव देखा एशिया कप में, बाबर की विकेट लिया था उन्हें, एंड वो मैच में जो हारी थी इंडिया आई थिंक पाकिस्तान से, क्या जबरदस्त बॉलिंग करता है. इकोनॉमी रेट भी चेक कर लो उसका, जबरदस्त था, बहुत एक्यूरेट बॉलिंग कर रहा था, उसको पिक नहीं कर सक रहे थे. तो माय पॉइंट इज कि लेग स्पिनर्स को खिलाओ, एंड build trust on your bowlers ki they will be able to defend, or they'll be able to help you set a target where your batsman can achieve, even if you're playing a batsman short. But I just feel they'll probably go with 1 leg spinner and 2 off spinners who can bat. That's what mera jo gut feeling hai. Yeah, I think I agree with that, because that's how India always are. They always want that safety belt, एक हमेशा होना चाहिए उनके पास. But Kuldeep would be very effective लगता है मेरे को, एक wrist spinner जैसा. You always back the wrist spinner, you always want a leggy in the team. But Kuldeep Chahal एक साथ would be a little मुश्किल, given off spinner हमेशा mostly pick होते. Yeah, and also they need to back the likes of Bishnu, and whoever the young leg spinners come, they have to back him, because look, Chahal has the experience and he can come back into form, but you always need to have the backup option. आप वो फॉर्म में नहीं था एशिया कप में, आप बिश्नोई को खिलाए, फिर एकदम से क्या हो गया, कहाँ चले गया बिश्नोई, में कुछ समझ में नहीं आया, आप उसको एकदम से क्यों निकाल दिया टीम में से. So you always need to have the backup leg spinner. If one's not working, leg spinners will pick you wickets. Yes, the Indian grounds will be smaller, it won't be as easy to you will get hit for sixes, but also the pitches will wear down and there will be conducive
to spin. So you have to keep a leg Mhm. spinner in the team, and that is your formula. Get wickets, and think India was successful in that 2018-19 period after the Champions Trophy because they were picking leg Because spinners. Yes, playing, they didn't yeah, win the World Cup in 2019, but if you saw, they topped the group stages there. They were the and most consistent team along with Australia because they had leg spinners Kuldeep and Chahar playing together, picking up wickets and giving their batsmen a suitable target to chase or defending a target. Against yeah, Pakistan, these guys hit 300. Kuldeep came, he got Babar out. Chahal came, he picked up wickets, and the game was done. In that manner, always good to back leg spinners. Right now, Kuldeep is in form. Back him, and play him. But I'm not saying you have to play one particular thing, but always try to play leg spinners in your team. That's what I feel, and because the other teams will do that. Australia will do that. England will do that. Pakistan will do that. So you also have to go on that route and pick leg spinners and back them. 100%. Yeah, and the good thing about the Yo-Yo Test Fest for me is that I hope the fielding will improve. The fielding was so poor. So bad. Yeah, From everyone, even Virat Kohli in the Test matches was not up to the five mark. So five drop catches in one day, man. That yeah. was shocking. I hope this yo-yo and everything, like they have to focus on fielding. Aapka batting coach, fielding coach, it's not just about throwdowns and everything. It's about also discussing and having tactics. Setting fields off the field. आप बैठना changing rooms में आपके कप्तान के साथ and saying कि भाई ये बैट्समैन के लिए मैं कहाँ फील्ड रखूँ, ये वो प्लानिंग होना चाहिए. मुझे कभी कभी नहीं दिखी वो सेमीफाइनल में, मैं तो बिल्कुल नहीं दिखी प्लान. बटलर रहे जब प्लान बी कहाँ था, या फील्ड सेटिंग में नहीं दिखी ना बॉलिंग चेंजेस में दिखी. So you have to, these are the jobs of the coaches now, the batting, bowling, fielding coaches, is not to just give throwdowns and go through the motions. It's also planning off the field. आप tactics रखो, and फिर उसके बाद देखो भाई कैसा हो रहा है, and you always have that backup plan कि भाई अगर नहीं चल रहा कुछ and thing, and no problem, आप हारे तो हारे matches, मगर थोड़ा दिखाओ कि भाई planning करके आए हम. मैं बोल रहा हूँ ना आपको, द बिगेस्ट अंडर लाइक अप्रिशिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ क्रिकेट इज फील्डिंग इन एटलीस्ट इंडिया. मतलब इट इज नॉट कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम रीजन. लोगों को लगता है इट्स वेरी इजी, बट आप जब न्यूजीलैंड जैसे टीम को देखो, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आपके माइंड में आता है? भाई उनला बाउंड्री पे भी कैच आन ले लेते हैं, उनला बाउंड्री से ढकेल के छिक्के रोकने. That is all. In 2019 World Cup also we saw their fielding was phenomenal. They were stopping everything. They were, and that is what 1-2 runs. That is what adds to your team chemistry. That is what adds to your team confidence, right? अगर आप 1-2 रन सेव करते जा रहे हैं, आप एक पैट ऑन द बैक दे दिए, एक फ्रेंडली चेयर हो जाता, वो कभी इधर विकेट कीपर के पास आके हाई फाइव देते, कभी स्लिप लेके के वो एक फाइव देते. दैट इज समथिंग दैट्स सो इम्पोर्टेंट, जो अपने पास नहीं करते. अगर आप 2022 जो वर्ल्ड कप अभी गया है T20 का, उसमें भी देखो पाकिस्तान इनिशियली वर नॉट वेरी गुड इन द फील्ड. द मोमेंट दे बीट साउथ अफ्रीका, उधर से जो उन लोगों की फील्डिंग, हारिस रऊफ, इल्ला सब डाइवा कर रहे थे. हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, ऑल ऑफ दिस गाइस, they were diving in the field. They understood that भाई फील्डिंग मलाख, and they saved a lot of runs. So I think वो भी important And है कि they lost both finals, Asia Cup and World Cup, on fielding and on fitness. fielding. Because if you see, Yeah. Sri Lanka outran them in terms of singles, doubles. Single field. Hasananga, Rajapaksa were quick between the wickets. Then also in the field, they took all the catches in the Asia Cup final. Pakistan dropped a lot of catches. Then if you see the T20 World Cup final, England saved 15-20 runs in the field. And the twos, the single doubles that Stokes ran and these guys ran. Even in the beginning, Butler was running those single doubles very quickly, stealing the thing. So they won. The fitness and the sharpness in the field was a big contributor to the victory for these sides. तो आप जब फिट होते और आप जब फील्ड में भी एजाइल रहते हैं, आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैटिंग में भी फर्क पड़ता. आपको मालूम होता कि भाई कैसी शॉट किधर, कौन सा टच, कितना ले देना, क्या देना. तो आई मीन एवरीथिंग कम्स टू द फिटनेस थिंग. लेन भाई वो जो छिक्का विराट कोहली मारा अलोन, वो फिटनेस की एक एक सिंबल है. तो आप समझ जाओ कि वो सिक्स मारना कितना मुश्किल था. बिल्कुल. अंशुल भाई बोल रहे संजू खेल सकता 2023 वर्ल्ड ओडीआई वर्ल्ड कप में. हाँ, खेल सकता. Now I think they will give him a run, but he's not in the one days though. That's the surprising thing. T20s में है तो उसको जो भी वर्ल्ड कप आ रहा है उसको अलग फॉर्मेट में डाल दे रहे. अब उसको चांस देते नहीं देते, मौका मिलता नहीं मिलता, वो देखेंगे. I think Sanju Samson now has to have a Surya Kumar Yadav type IPL where Surya was also not getting chances regularly in the Indian. He wasn't getting picked in the Indian team, but then he just broke down the door where he just averaged like 60-70. I think in the 2020 IPL he went Mumbai Indians the IPL. Sanju Samson has to win Rajasthan the IPL with the bat, and he will get into he has to knock it down.
basically. And whenever he gets the chance for India, score runs, leaps of runs, whatever format, just score runs. That's going to be his currency. He has to break the wall down. That's what he has to do. Yeah, and Yes, Sanju, he get San, chances, San, but he hasn't hmm. broken that down, the wall down yet. एग्जैक्टली या ब्रेकिंग डाउन के अलावा कंसिस्टेंसी जो है बोल रहे हैं मुस्तफा भाई परफेक्टली. मेरे को ये लगता है कि भाई अभी जो कोर टीम की बात हुई 20 मैन स्क्वाड में बस इन्हें आ गया ना रिजर्व्स में भी, देन इट विल बी अ इफेक्टिव अभी थिंग फॉर हिम. सूर्या कुमार की भी जगह पक्की नहीं है वनडे में. हाँ, बट एटलीस्ट क्या है, सूर्य कुमार प्लेड विद दिस टीम व्हिच इज अ कोर ऑफ 11 अगर आप बोल सकते हैं, इन द लाइक्स ऑफ रोहित शर्मा, केएल राहुल, शुभमन गिल, यू नो विराट कोहली एंड ये हार्दिक पांड्या, ये लोगों के साथ खेल के लास्ट ईयर. संजू सैमसन अभी उतना नहीं खेल के इन लोगों के साथ, तो वो केमिस्ट्री के हिसाब से अगर इन लोग देखेंगे अगर, या माइंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर, तो संजू डजंट एक्चुअली फिट दैट पजल. But agar Sanju manages to have a spectacular T20i and a spectacular IPL, then maybe also consider कर सकते 50-50 के लिए and put him in that reserve squad at least of the last 5 to 6. 100%. There will be competition, but that's what I'm thinking. Surya Kumar, Sanju, chance मिलेगा नहीं मिलेगा, only time will tell. अभी तो Because पक्की Ishan नहीं है. Kishan is also there. Ishan Kishan is also there. KL Rahul is श्रेयस also अय्यर there. भी पकड़ के रख रहा अब वहां पे. श्रेयस अय्यर भी पकड़ के इंडिया रखा. में इंडिया में भी उन्हें आउट हो रहा शॉर्ट बॉल पे, बट मे बी विल बी लेस इफेक्टिव इन इंडिया कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया. तो अब देखेंगे क्या होता है श्रेयस अय्यर के साथ भी. ही प्ले स्पिन रियली वेल, तो मे बी ही हैज आल्सो एन ऑप्शन इन द टीम. दीपक हुडा, ही इज अ यूटिलिटी प्लेयर. अब Yeah. उसको भी बैक कर सकते हैं वनडेज में, बिकॉज उन्हें आपको डाल सकते हैं. एंड दीस गाइज नीड टू स्टार्ट बॉलिंग, हुएवर इट इज. टॉप 5 बैट्समैन जो हैं आपके, जो भी है, दे हैव टू बॉल इन द नेट्स. दे हैव टू बॉल एंड फिर मैच में दे देना ओवर्स. यही सीरीज में जो श्रीलंका में है, ये आई वांट टू सी. If Rohit Sharma is playing, I want to see him bowl. Virat Kohli is playing, I want to see him bowl. Shreyas Iyer, I want to see him bowl. Bowl them. Doesn't matter if it's one over, but bowl them. And then you can judge later. But Yuvraj Singh was a key bowler in that 2011 World Cup. Don't forget. 100%. So you have to have those options available. First, do we have the predicted 11s? Or we're going to look at that tomorrow. Do we have that available for the India Sri Lanka? I think we can do that right now, or I think No, we can no, do we that don't have tomorrow. to. Yeah, we can do it tomorrow. I thought we had a graphic, but it's okay. We can look at it tomorrow. I think for me, the biggest question in that 11 for the T20s will be Gaikwad या शुभमन गिल किसको ओपन कराएंगे आप, and सुंदर या अक्षर पटेल कौन सा ऑलराउंडर खिलाएंगे. I'm going with the basis that एक लेग स्पिनर खेलना है. They can easily drop a leg spinner and play both of them, but I think you should play maybe Sundar and a leg spinner, and maybe you can play Aksar as the third spinner. But I don't know how they're going to do that. But the main question probably would be Shubman and Gaikwad. Who will you open with Kishan? With Kishan, I probably go, yeah, because Shuman hasn't been that great in the last few innings. But yeah, I would want to really see Gaikwad how he performs. Like, I think first match, maybe I'm just going to go with Shubman Gill because he's been playing consistently. Agar Shubman fails in the first T20, then maybe second T20 I see Gaikwad coming. So ideally I'd go with Shubman Gill and Ishan Kishan, but I'm very excited to wait and watch what Rutraj does if he gets the chance. Yeah, 100%. I think Pandya's press conference was today as well. It has. I don't think it's happened yet, or it's going to happen soon. We'll discuss that tomorrow as well. What he says in the press conferences, we'll get a better idea of the lineups and everything. And tomorrow we'll preview the series properly. From the if I just look at it right now, Sri Lanka will prove a challenge. You have the likes of Hasaranga there. You have Rajapaksa, Mendes, all these guys who were sublime in UAE, and it'll be similar conditions in India. Maybe more batting friendly, so the bowlers will have maybe a bit more tougher time. The Sri Lankan bowlers, they have exceptional options with the ball as well. Ibrahim Bhai Singh, Sanju can be considered with, but not fit as Pant recovery timeline is uncertain right now, and as he can be back up to Kishan and KL if their first wicket keeper picks for ODIs. Yes, it could be. The thing is, I wouldn't put KL Rahul as a wicketkeeper, but they will do that. I would keep him as a batsman if you're playing him, and keep your keepers as Kishan and Samson, because I want regular keepers, full-time keepers. And Samson is more full-time than KL Rahul, in my opinion. So then I would go with these two. Lekin if KL Rahul is your first keeper, will you go with 3 keepers? I don't know if they will do that. With the back 3 keepers in the team. I don't think they will. I think past, I don't think they consider they could in the T20. They had KL Rahul, Dinesh Karthik, Pant. They could, but I don't know if they will or they will not. But Samson will definitely have a chance. We hope that Pant recovers as quick as possible. But if he's not fit, if he doesn't get to play, a big part in this year, then you could easily see Samson fitting into this one-day team.
या 100%, but I still see that वो 3 विकेट कीपर का बैकफायर वही हुआ कि एक लेग स्पिनर को नहीं लेके गए, या लेके गए तो नहीं खिलाए, बट लाइक आई थिंक वही होने वाला है कि आई डोंट थिंक 3 विकेट कीपर फिर कभी करने वाले हैं ये लोग, because that वो was just भाई a ये waste of बहुत प्रेशर रहेगा सेलेक्टर्स पे. दैट्स व्हाई यू नीड स्ट्रांग माइंडेड सेलेक्टर्स, who don't shut down the outside noise and everything and just stick with the team and be consistent, because you're playing in Indian conditions. एक भी slip कर दिए तो सब चढ़ जाएंगे आप पे. So you have to have a very very strong mindset going into this World yeah. Cup. You're playing in home conditions. There'll be a lot of scrutiny. आप जीते तो बोलेंगे भाई आप घर पे खेल रहे, हारे तो you'll say कैसा हार गए, शर्मिंदा, ये वो. तो it's not going to be easy either way for India. This will be the test. They Yeah. will have to perform, and main thing is trying to get victory. Whatever is said later, thing, but you go for that trophy, and that's how you build your team basically. India just need a good streak of victories right now to get their confidence back. I think they've just not been consistent enough in getting victories and being clinical in the end, right? That I oval don't think scorecard. that will do much. Because, yeah, I think they need to get proper, matlab, clean sweep victories, हाँ वही, whitewashes. But whitewash still, is I don't know, clinical man. in The terms World of Cup आता cleaning है, up the ये tail. बड़ी series आई तो फिर वही पिंडे में आता. I think the first thing they have to do is win that World Test Championship. If they can win that, that will give them confidence going into, because you'll win in English conditions that final, and then you will go to that World Cup saying, "Ki, bhai, we're Test champions now. Let's crack that one day thing." And you're up against some quality one day teams. England, oof, they're by far the best team in limited overs cricket. उन लोग तो baseball हर format में खेल रहे हैं आजकल. लेकिन अगर Yeah. आप T20s और one days देखो, मंजीवी team है वो. And now they have replacements like this. And they They all play well in India. yes. Yeah, all conditions. That's what I'm saying. उन लोग हर condition में ready है. इंडिया में रहने दो, इंग्लैंड में रहने दो, ready है ये team. They have different tweaks that they do. Maybe they'll give Moeen Ali more of a chance in India, whereas maybe in England, लेकिन they have options for every conditions. England, so it's not going to be easy coming up with these teams. Yeah, definitely. And yeah, with Australia's current form, अगर ऑस्ट्रेलिया के भी प्लेयर्स अगर आके इंडिया में हल्ला मचा के अभी कंडीशंस का एक चस्का लग जाएगा, they'll have a taste of what is to come, right, in October. And obviously with October being a little bit more windy and stormy, so conditions will be more swinging probably. थोड़ी बहुत turn expect कर सकते हैं अपन, but ऑस्ट्रेलिया को मालूम हो It'll be जाएगा कि fresher भाई, the pitches. एंड आपको मालूम हो जाएगा कि भाई ऐसा है यहाँ पे मसला, जरा चलो ऐसा करेंगे टीम को थोड़ी सेशनी मशीन, एंड इट्स परफेक्ट टाइम फॉर ऑस्ट्रेलिया टू कम, बिकॉज भाई न्यू ईयर के टाइम पे आके पूरा रिपोर्ट ले लेके अक्टूबर में आते भाई, सी यू लेटर एलिगेटर बोल के चले आते, बट मजा आने And then वाली you है. can't count या out New एंड देन Zealand. इवन इन द नॉट जस्ट न्यूजीलैंड, इवन द स्मॉल गन्स जो अपन कंसीडर, बांग्लादेश अभी अपने को हकाल के मारी, पचकाड़ा मारी, चलो बांग्लादेश में मारी, बट सिमिलर विकेट, राइट. उसके बाद अफगानिस्तान, अगर अफगानिस्तान is there, Afghanistan also one team that I'm very always look forward to watch. Zimbabwe, we know what they've done in the T20. I mean, I'm just going to give a shout out to the guys because अपन किसी को भी अब छोटा नहीं समझ सकते भाई क्रिकेट में. Pakistan, we love the conditions as well. वो पाकिस्तान तो हमेशा मजा आती भाई, उन लोग के बारे में Yeah, सोचे तो they ही will मजा love the आती. Indian kids. They will play well in Indian conditions for sure, I think. And ICC tournaments, in लोग कुछ ना कुछ निकालते, तो it will always be a challenge leading up to the World Cup. That's why your preparation has to be good, but then you have to have that mentality in the World Cup. That's mentality by even if you lose, it's okay in certain games, but you improve and you go with it. I was watching that documentary of 2019 World Cup, and they're showing the highlights of a lot of the games, and England lost like against Sri Lanka and Australia back to back, but then they came back and they went at it, and there was a lot of questions in the media to Owen Morgan and all these things like, well, you need to stop playing this aggressive cricket, but they continued and they won the World Cup. Yes, there was a lot of luck involved, like, and that's what you have to do. You have to shut out the outside noise, but not just say that we shut out outside noise. You actually have to like focus on your team and build that thing. Maybe you go on like a trek or something before the World Cup, like June, July, May, go to like Europe or North America as a team, do some building. I remember Langer had taken the Australian team before. When he took over as coach, he took them to France, and वहाँ पे दिखाए चीज़ें. They did some trekking and also showed some historic things where the Australian soldiers had fought in France and everything like that. So you do something like that, like do some team building, and it can How always we help. come to Dubai? How we come to Dubai? बोल के चले आते वो boys तो पूरे. आते रहते.
पहाड़ी होती है। ड्यूक का फैक्टर रहेगा वर्ल्ड कप में, 300 भी हम्म, सेफ नहीं है, ये बिल्कुल ये इशू होएगा। अब आई डोंट नो अक्टूबर और नवंबर में औस कितनी पड़ती है वहां पे कंपेयर टू द समर, बट आई थिंक इट विल बी देयर। आई होप इट्स लेस, लेकिन दैट विल बी अ बिग चैलेंज मैन। एवरीवन विल विन द टॉस एंड बोल फर्स्ट। आई होप द मैचेस आर नॉट लाइक दैट, बिकॉज यू सॉ इन ऑस्ट्रेलिया ड्यू उतनी नहीं थी, इट वाज मच बेटर। बैटिंग फर्स्ट भी जीत रहे थे, बैटिंग सेकंड भी जीत रहे थे, टॉस वाज नॉट अ फैक्टर, टॉस उतना बात ही नहीं करे हम लोग। मगर यूएई में सब कॉन्टिनेंट में हर वक्त टॉस की बात होती, तो आई होप दैट्स नॉट द केस इन दिस वर्ल्ड कप। होपफुली नॉट, बट जिस तरीके से अक्टूबर का महीना लास्ट ईयर गुजरा है, इट्स मूव्स व लॉट ऑफ रेन्स एंड अनएक्सपेक्टेड रेन्स, लाइक रिकरिंग मानसून जो अपने कने होते रहती वो भी हो जाता कभी, तो उससे भी काफी पानी रहता है। एंड ऑब्वियसली मुंबई जैसे जगहों में तो सी बाजू ही है, तो लॉट ऑफ थिंग्स कैन क्रीप अप, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर ईच कंडीशन मैन। आप ये नहीं बोल सकते कि ब्रू है, फ्यू है, माउंटेन ड्यू है, आप सीधा जाके आप खेलना पड़ता हर कंडीशन में, और आपका घर है और आपको घर में आप मेहमानदारी निभाना पड़ेगा, सो आई थिंक वही होगी। Mm-hmm. Yeah, I think in the 2011 it was decent. It wasn't too much, toss play matches, but the final was one batting second. Welcome to the सर जी, stream. हेलो Akil, सर, Happy New हैप्पी न्यू Year, ईयर। bro. Thank you so much for joining us. आपकी कमी महसूस हो रही थी. We're also missing Vinesh bhai, Gurnoor Paji. Quite a few people. I don't know if you guys are still with us right now, but if you are, send in your comments and your questions. We will take them as we go. And thank you so much, Takil. आप always हमको support करते हैं दिल से. बहुत बहुत शुक्रिया, and hope you're excited for the new year, new cricket season, or I mean continuing the cricket season. But for India, it's a fresh start against Sri Lanka, and let's see what happens after this review. Is it just baatein, या will we see something बट different? It's about बेस्ड yeah. बेस्ड ऑन द टीम्स लाइक दैट दे पुट आउट ऑन पेपर, श्रीलंका में मैं काफी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, बिकॉज इट्स अ फ्रेश स्टार्ट, एंड इट्स लाइक बोलते ना फ्रेश स्मेल, बिकॉज यंग जनरेशन यंगस्टर्स को बैक कर रहे, 100% नो सीनियोरिटी। हाउ विल द टीम शेल आउट इन दिस थिंग, वो देखने को इंटरेस्टिंग है। हार्दिक पांड्या कैसा खेलेगा, 6 ओवर से ज्यादा मतलब 6 ओवर तो नहीं डाल सकता, 4 ओवर पूरे डाल के विल ही सस्टेन द होल थिंग। he is a good leader. I mean, he is one with the guys उन्हें काफी very adaptable, very friendly है in his nature. So it's going to be interesting. फिर वो सीनियर वाले के साइड में कैसा होने का, वनडे इंटरनेशनल आएंगे, हार्दिक बेटर लीडर और रोहित बेटर लीडर कैसा होगा, ऐसा देखना है मेरे को। तो बहुत मजा आने वाला है इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, एंड या इट्स जस्ट गोना बी फन। होम मिनिस्टर से भी मिल गया हार्दिक पांड्या, बाय द वे। Yeah, Hardik Pandya and Krunal as well. Babar said in press conference, Akil Singh, that हम लोग जीतने जा रहे थे, लेकिन बैड लाइट और या वजह से आई हम सेंड दिस टू यू, या मैं वही मुस्तफा भाई को लेकिन भेजा था ये चीज। मुस्तफा भाई ये चीज बोले थे कि ये सवालों के लिए था। ये बैगन के बात है पूरे, उन्हें डिक्लेयर करा ये बोलने के लिए, ये जवाब रेडी था उसके दिमाग में जब डिक्लेयर करा। 15 ओवर में बैगन 11 विकेट लेता टेस्ट मैच में। बैगन पकड़ो, जितना भी रैंक टर्नर रहने दो, कुछ भी रहने दो, पिच में कुछ था नहीं कि आप 11 विकेट ले सकते इवन 30 ओवर में। 15 ओवर में आप ऑल आउट करने वाले थे उन लोग भाई को। चलो ठीक है, आप 15 ओवर आपके दांत क्यों चले गए थे? दांत गायब हो गए थे आपके, दांत ई थे पूरे, फिर दांत एकदम हो गए थे पूरे, चार जो बैक टू ये बैक फोर बोलने के जब। लिए उन्हें डिक्लेयर करा, backfired on him bro, it backfired on him. And look, I'm not against Babar. I met Babar, I respect him a lot, he's an excellent batsman. लेकिन भाई कैप्टनसी में ये इश्यूज है उसके। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दो, लाइक ही रीच्ड सेमीफाइनल फाइनल, ठीक है, जो भी आप कुदरत का निजाम बोल सकते हैं, ये वो उन्हें लेके गया पाकिस्तान को, बट ही मेक्स मिस्टेक्स, ही मेक्स थिंग्स एंड ही हैज टू लर्न फ्रॉम देम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और ये जो है, ये उन्हें डिक्लेयर इसलिए करा कि बोलने के लिए भाई हम गए विक्ट्री के लिए। बैगन 15 ओवर में लेते, न्यूजीलैंड हैड अ बेटर चांस ऑफ चेसिंग इट डाउन, फिर आप क्या करें? वो तो बी सही है। आई थिंक, सेंसिबल बट मैन, आई यू हैव थिंक टू बी सेंसिबल। आई थिंक ही वाज जस्ट लाइक यू सेड फाइंडिंग एन एक्सक्यूज, बट एटलीस्ट मेरे को ये था कि ही हैड द गोटा जो अपने पास बोलते टू डू कुछ इट। भी आई नहीं मीन था चलो, उसको ही भाई, न्यू इट, हाउ ही तुम न्यू इट, समझ आई रहे, एग्री। आई बैड लाइट का नहीं मालूम था उसको। आई एम सेइंग ही न्यू इट, एटलीस्ट ही लाहौर वेंट का आउट है, एंड मगर डिड इट। मैच देख चुका है मैंने। ही न्यू कि भाई लाइट खत्म होने वाली है, और उसको ये भी मालूम बराबर, था। या इट्स बराबर नॉट, बाबर। 15 ओवर में चांस था न्यूजीलैंड को, उसको ये भी मालूम था, मगर उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई लाइट खत्म होने वाली है, देयर इज नो लाइक 5 बजे के बाद इज ऑलवेज गोइंग टू क्लोज, और वो लोग 5:20 हंड्रेड परसेंट भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी बात कर रहे हो, वो तो कुदरत का निजाम है, क्या मालूम लाइट ऑन भी हो जाती थी, लेकिन मेरी पॉइंट ये है कि भाई एटलीस्ट जितना भी लेट्स से उन्हें कैलकुलेटेड करा, ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग एंड स्टफ लाइक, फिर भी वो चीज करना करा एटलीस्ट।
लाइट करा मतलब क्या है उसका, क्या है मतलब, करे तो क्या, थोड़ा, बट मैं समझ एटलीस्ट नहीं आ रहा। होपफुली जो मेरे को दिख रहा है, होपफुली इफ ही इज गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग लाइक दिस, देन थोड़े और सवाल उठेंगे आज तक थिंक को कि आपने ये ये क्यों नहीं Covering करा his अगले back, टेस्ट में। bro. He was covering his back. That's all he was doing. आप 100% अश्योरिटी थी कि भाई नहीं हारने वाले हैं ये मैच, लाइट खराब होने वाली है, तो सेफ के अगर वो सोचता तो पहले डिक्लेयर करो, उन लोग को और छोटा टारगेट दो, या अच्छा बट and- या आगे बढ़ के मारो, लाइक द बैट्समैन शुड हैव हिट। हाँ नहीं, आई गेट, मैं वही बोल रहा हूँ, बट इट्स जस्ट कि भाई एक नई पाकिस्तान की उम्मीद जागी। और ये भी है, देखो ये बैड लाइट का अभी बैट्समैन अगर लेथम के हाथ में था, उन्हें कभी या डिक्लेयर ही नहीं करता, उसको मालूम है नहीं भाई इन करता लोग था। तो अंधेरे में भी मार देंगे हमारे को, तो इसलिए वाकई उसको मालूम था अंपायर के हाथ में है बोल के, लाइट है बोल के मामला, स्पिन से बॉलिंग करवाता, फिर देखते हैं क्या होता। ये वही है अंशुल भाई सही बात है, सही बात है, या आई नो व्हाट यू आर सेइंग, मारना है बस। बिल्कुल सही I बात know है। Faiz is trying to find a. It's good, like you're looking at a different opinion, but I'm not buying that, bro. And there's no way I'm buying that. World Cup failure, BCCI meeting outcomes looks interesting. Yo-yo test, yes, we discussed this. Fitness is important than skill and form. We discussed this. 20 probable means we also discussed this. No experiment, just players know that they will get enough amount of chances. Yes, they will get enough amount of chances, and you still have that room for flexibility because you probably have the 5 players coming in and out of a 15-man squad. If it is a 15-man squad for tours, so you have that flexibility as well. Ibrahim Singh, I think it can have a double effect, as with colder weather in India during October, it could provide moisture on the pitch, which will bring seamers into the game. And on hotter days, Yeah, dew plays a role. Yeah, I think when there's humidity and there's heat, the dew comes in more. That's why probably in the summers you see it a bit more. Like it could play. There will be days where it's humid and dew will come into play. And like Faiz also mentioned, the pitches will be fresher because it's the start of the season. Right after the monsoon season, you will have that. World Cup in October. Hopefully, we don't see that much rain. We don't want another like a World Cup to get affected by that. I feel that the thing is that the pitches will be fresher. There will be grass, especially if they're playing in Dharamshala, Mohali up yeah. north. Fast No, bowlers could. मोहाली में तो है, आई थिंक, या मोहाली में इट विल बी फास्टर पिच। Yeah, it'll be faster pitches up north, whereas in the south it might be right. It depends also किधर south में खेल रहा है और कैसा रहेगा pitch. But yeah, first But you want yeah, to. do you see any changes? Acha, you want to go to the fantasy picks and chips, or No, you'll go. But tell me, what are you asking? वही टीम्स का पूछने वाला था कि do you see any probable changes in the Pakistani squad? Yeah, let's discuss that. It's time for tips and chips. Pakistan should look to make changes. Shan Masood I think, needs to get dropped. In the bowling wise, they need to probably get Hassan Ali back in. Sajid Khan? Sajid Khan, spin option you can, but who will you drop? Noman? Yeah, Noman was decent actually. Yeah. It wasn't that bad. Yeah, maybe get in Hassan Ali, get in someone for Shan Masood. They should make something from New Zealand side. Maybe get a faster bowler in the ranks. Don't know what options they have right now. They can go there, but I feel that there will be more spin on offer on this pitch. That's the gut feeling I'm going. So my picks will be Sodhi and Abrar Ahmad for tomorrow. I think for tomorrow's game. क्या बात है, पूरी स्पिन टीम डाल दिया आप तो। Yeah, that's what I'm going with. But if it's a flat pitch, then I'm gonna go with Imamul Haq because of his performance in the last innings. I feel Imamul Haq is gaining confidence back and he's out there to prove कि भाई मेरे चाचा या मामू जो भी थे उनके बदौलत नहीं है, मैं गिफ्टेड हूँ। तो I think Imamul Haq is going to be my pick from them, and yeah, I'm going to go with Tom Latham, man. उन्हें तो मैं luggage player दिखाऊंगा। That was my pick last game. Yeah, But he's yeah, becoming one Dom of my. Latham is a sensational player of spin. He's really good in subcontinent conditions, and the Confidence, fact that man. His confidence is something else. When very he's taking the underrated. shot, he knows that I am making the right choice. Types of play, man. Seriously. Yeah, and he'll be a key player in that one-day World Cup. I hope to see him in the one-day squad, and उन्हें middle overs में अच्छा build कर सकता है New Zealand के लिए. And we've seen that he has the ability to attack as well. Yeah. Because of infinite experiments during time between ICC events hurts our chances and amount of games we played. Thus, our players look exhausted before going ICC events. But look, it's a two-sided thing. You're saying that they get exhausted, but then also there's rotation. They're getting rested.
So I don't know if it's exhaustion or if it's just lack of ability or lack of temperament. Time management, lack of time management in the players' life themselves. I think they just take up too many things. छुट्टी लेने के छुट्टी तो लेते फिर एकदम खेल रहे फिर खेलते खेलते फिर छुट्टी ले लेते फिर खेलते. जब You need रेस्ट to ले be रहे हो फिर वो केमिस्ट्री बिल्ड नहीं होती, जब रेस्ट नहीं ले रहे फिर आप थक जाते, तो कैसा आप बैलेंस करना वही देखना है. 35 exactly. ODI and 2.5 months of IPL, also a few Asia Cup matches, so one more time player management is required before ICC World 2023. But man, like the thing is, what I'm saying is, I understand India play a lot of games and everything, but there's a lot of players international also play a lot of cricket. If they're not playing for their team, they're playing for another team in franchise cricket and everything. And a lot of them, like you have the full Pakistan team playing in like what's it called, West Indies, if for that CPL, or they play in other leagues, they'll play in PSL. So you have a lot of players. They're able to manage it. For India, it's more of a problem. And if you don't manage it, then it becomes an issue. If they get if you give them too much rest, that also becomes an issue. So you have to be balanced. Abdullah Shafiq, my man, just promote him at 5 after Babar looks control batsman. Abdullah Shafiq is opening batsman. Yeah, just promo. I think Promote he's talking him at about South Shakil or Abdullah Shafiq. maybe Saud Shakil. I think Rizwan and Hassan Ali will come into the team in place of Hamza and Shan Sarfaraz. Sarfaraz, I think, is keeping was poor, and that could be reason they drop him. Also, Babar prefers Rizwan. It's a good point. I feel that Sarfaraz was keeping was poor, but he batted better than Shan, so you can keep both Sarfaraz and Rizwan in the team, I feel. Sarfaraz will stay, in my opinion, he should stay because of the innings that he played. Second, crucial, Rizwan will never be able to do that in the current form that he's in. I'm not saying that he won't be able to do that, but given the context of the test match, 2 times Sarfaraz came and held the threshold, right? Though he gave in the first innings a lot of chances, उन्हें almost hit wicket हो गया था, almost वो हुआ, but he hit 50s consecutively. And remember, bear in mind, 3 साल के बाद क्रिकेट खेल रहा उन्हें. Second point, third point, भाई उन्हें बचाया आपका टेस्ट मैच, वरना आप चले गए थे. अगर उन्हें वो पारी नहीं खेलता भाई, खलास, मा सलामा, बाय बाय हो जाता था मसला. दोनों को खिला सकते, शान मसूद को बिठा देना फिर. हाँ, वो मोहम्मद कर कैफ सकते सेड हैं. great comment on player unfit होते हैं, NCA जाते हैं, कुछ fitness test देते हैं, just back in quick succession without playing at least 5 first class or practice matches. That's very true, because nothing is better than match practice. You need to play matches and then come into it. And there is talk now that domestic cricket is going to be a sort of place where you'll have to go and prove yourself, whether you're a young player or senior player, and hopefully that's the case. लेकिन that's true, like एकदम से वापस आते हैं based on reputation, but where is the fitness, the match fitness, match awareness, तो पूरा अलग रहता है वो system. And also the NCA has to do a better job in recoveries. They need to get people back from injury, and with the IPL and the IPL teams, this become a confusion. Some players go for the Mumbai Indians, they go to their doctors and stuff when they get injured instead of going NCA. But now I think they've made the rule you have to go to the NCA, but NCA has to make it better. They also have to improve themselves. They also have to make sure the recovery is quicker, because you can't have so many players getting injured for such a long time. Where is Jadeja, bro? Like उन्हें सर्फबोर्ड जो करा, I don't know इतना टाइम क्यों लग रहा है उसको. ठीक है, उसका लग गया. बुमराह को क्यों इतना टाइम लग रहा? हार्दिक पांड्या क्यों इन एंड आउट रहता, क्यों उसका बराबर फुल फिटनेस नहीं है? It's not just one player I'm talking about. So you have to look at the whole system, and the NCA has to improve the recovery period. They have to also make sure the players come and think. And yes, now that they have that responsibility, I'm sure they will take it. Lekin the players also will have to give in their best to recover quickly. अब ये नहीं हो सकता कि भाई अब हर प्लेयर इतना टाइम के लिए इंजर हो रहा है, और ये एक प्लेयर रोहित, राहुल सब इंजर हो रहे हैं. और पॉइंट ये भी है ना मुस्तफा, कि जिस तरीके से बोले 35 ODIs 1 IPL सीजन, आपको उस सब चीजों में आप भूल जाते हैं सब, और आप ये सवाल पूछते भी नहीं. आप कितने लोग एक्चुअली मीडिया में खड़े के क्वेश्चन करे ये बात कि भाई इतनी लंबी इंजरी का जो सिलसिला है ये क्यों नहीं चल रहा. आई थिंक ये सवाल के जवाब आप पूछो भाई, ये सवाल पूछना जरूरी दिया है. था जवाब आपके कप्तान बोले थे कि भाई मेरे को खुद नहीं मालूम ऐसा क्यों रहा है, shouldn't be the case. That's what I'm saying. That's stupid. And then again, you should raise it up in this thing. And अब I think जो अगर जैसा आप बोले NCA सेंट्रल कर देना, मुंबई इंडियंस का डॉक्टर कुछ बोल रहा, NCA का डॉक्टर कुछ बोल रहा, भाई ये क्या है भाई? एक जगह सब जाओ, नेशनल क्रिकेट एकेडमी अराउंड खराबपना है. वही है.
एक रहना चाहिए प्लेयर का कॉन्फिडेंस आईपीएल फ्रेंचाइज मेडिकल टीम पे ज्यादा है इंस्टेड ऑफ बीसीसीआई एंड एनसीए मेडिकल स्टाफ दैट्स द रियलिटी इट इज द रियलिटी इफ यू सी लाइक सीधा वो जाते हैं या दे probably do a good job I'm not saying the franchise people don't do a good job लेकिन if you're representing the Indian team the NCA has to the National Cricket Association has to take the Hmm. responsibility why is a domestic franchise taking the responsibility yes they have more money or whatever but you're playing for Team India so they'll have to take the responsibility and they also have to make sure that the recoveries are thing they also have to भाई question themselves प्लेयर क्यों जा रहा है मुंबई इंडियन मेरे पास क्यों नहीं आ Yeah, रहा वही तो तो है आप ना भी भाई। improve एंड करो अपनी हाँ, जो अगर फिर भी आप मुंबई इंडियंस के उसमें भी जा रहे हो तो आप जल्दी रिकवर। वाई इज रोहित शर्मा कीप गेटिंग इंजर्ड इन मुंबई इंडियंस इज नॉट इफेक्टिव देन। या तो वही है लाइक यू हैव टू आल्सो क्वेश्चन योरसेल्फ राइट अगर हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हमारे घर को क्यों नहीं आ रहे दूसरे घर क्यों जा रहे जब हमारा है रिस्पांसिबिलिटी if both Exactly. play then Sarfaraz has to be wicketkeeper as he struggles in Yeah. field Rizwan is still good in the field and covers ground fast and effective in the field in test matches maybe you can hide Sarfaraz I don't know that's what I feel I said maybe you can hide him in the in test matches Fine leg but third I, man भी। I I would probably prefer Rizwan as keeper because Sarfaraz dropped and missed stumpings, but also with the review system, he was bad. And the reason was because he's coming after 3 4 years. He didn't feel like he wanted to dominate and talk all the time and whatever. So maybe he kept quiet a bit more. And whereas Rizwan already has a relationship with the captain, he has a relationship with the players. He's been in the team for so long, so for him it'll be easier to make these decisions. Lekin Sarfaraz, I agree with Faz to a certain extent with the bat he has performed right now. So you have to give him another chance. Competition itna hai कि ईशान किशन ने 200 मारे so Gill and other players not take his fitness for granted. They just go on and just before crucial stage of ICC events they get injured. Sarfaraz looks great with the bat, but his fitness is not up to the mark. As we saw, उसको चलने में भी issue था, हाँ issue था, and maybe that's because he hasn't played for a long time at the competitive level, and maybe Game we time need is important, yeah. we Game need him time to get बहुत some important international है। game time. But yeah, that could be another factor. But देन वही बात हो जाती है अगर उसको ड्रॉप कर दिए तो फिर सवाल ये उठेंगे कि भाई जो बंदा उसको रन लेके दिया आपको आप उसको ऐसा बैठा दिए उसका फिर उसका कॉन्फिडेंस का क्या और फिर रिजवान अगर नहीं मारा तो और प्रेशर अगर सीरीज हार गए रिजवान खेला सरफराज नहीं खेला तो पूरा बिल उस पर फटेगा कि भाई आप रिजवान आपकी दोस्त है आपका दोस्त है बोल के आप बैक कर रहे हैं और सरफराज बेचारा उसका क्या गलती है ये सब बातें शुरू हो जाएंगे फिर तो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल इफ you're Babar Azam when making the decision tomorrow. I just hope man it's not a boring test match bro. I just hope कि थोड़ा cricket टर्न होना यार, और that's all थोड़ा I'm नहीं asking. पूरा टर्न होना पूरा मतलब 3 दिन में खत्म होना टेस्ट मैच ऐसा टर्न होना होपफुली खतरनाक टर्न देखते हैं। होना हाँ। या लेकिन आज का बीबीएल के मैच देखे मुस्तफा? हाँ जी बोलिए आप हाई स्कोरिंग था हाई स्कोरिंग, 200 400 आई थिंक 435 रन्स कंबाइंड मारे दोनों टीमा। ब्रिस्बेन हीट वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के मैच में आई डिडंट इवन एक्सपेक्ट ऐसा 224 गए वैसा कुछ था, लेकिन जॉर्ज ब्राउन एंड नेथन मैक्समीनी यार क्या जबरदस्त पारी की। 62 रन्स जॉर्ज ब्राउन, 62 रन्स 23 बॉल्स, 4 fours and 6 sixes. Podcast 269 strike rate. Unbelievable striking था. And the Yeah. pitches have become better now last 2 3 days to bat on. So you will see more of this high scoring. मगर क्या खतरनाक पारी खेले उन लोग पार्टनरशिप भी जबरदस्त थी and yeah batting कड़क कड़क boundaries. Yeah, too good था और फिर Lesson was expensive today but he did the job in defending. He picked up 3 wickets. He did the job. Yeah, Sydney Sixers के लिए like there were a lot of performance जो like काफी combined करे and they managed to get to 209. Not only one standout you could say was James Vince and like Jordan Silk I think जो 41 each मारे, but yeah, apart from that they tried their best but weren't able to get to the target. Melbourne Renegades Perth Scorchers was the other match जहाँ पे Finch and Finch बाबा बहुत अच्छे फॉर्म में आ गए by the way. Finch बाबा अच्छा खेल रहे। फिंच बाबा आईपीएल का कॉल आउट पूछ रहे चाहे शायद तो because फिर he had a उन्होंने terrible T20 World Cup, man, yeah, and a very terrible time leading up to the T20 World Cup. Very very bad, and he scored a 65 and which Good to helped the see. Melbourne to get, helped to Melbourne to get to 155. But then pick of the bowlers was Andrew Ty again, who had his back-to-back spell actually 3 wickets for 32. Last match में भी जबरदस्त bowling करे उन्होंने। फिर Perth Scorchers Faf du Plessis starting 39 runs and Cameron Bancroft 46 of 32. जॉश इंग्लिश जबरदस्त बैट्समैन है यार, उन्हें कंसिस्टेंटली बीबीएल में थ्रू आउट अच्छा खेल रहा। another 47 of 34 जबरदस्त and he can be a backup to Alex Carey. He's keeper batsman, right? Josh English, so he can be a backup to Alex Carey, and maybe he might even start in games for Australia in the limited overs.
Yeah, 100% I feel. But And yeah, Right now, Perth is leading with one game down. They're 10 points, so they have a lot of redemption. नीचे से ऊपर आ गए वापस. But yeah, अभी top four है Perth Scorchers, Sydney Thunder, Sydney Sixers, and Rashid Bhai's Adelaide Strikers. कल देखिए राशिद भाई का गेम मार्कस टोइनिस मैन ही रिप्ड इट अपार्ट. क्या कर ले, 2 ओवर थे, एक सिडल को मारा, दूसरा किसको मारा याद नहीं आ रहा, मगर ही हिट 24 in 1 over 29 in another over. क्या कर ले मारा था. Rashid was mic'd up at that time. There was some friendly banter between him and Stoinis, but he mentioned to Isha Gua कि भाई Stoinis was just incredible. There was not much we could do in terms of stopping him, but क्या कर ले मारा था Stoinis. Good to see him in that type of form. It was some unbelievable hitting, man. Straight down the ground, square of the wicket. He was just immense yesterday. Yeah, I think the Melbourne Stars, they came up with something. Stoinis should have been put on timeout or something, because apparently there is some rule. I'm not sure. I just was reading this in the morning. 75 seconds के अंदर अगर next batsman ready नहीं है, तो Stoinis I think took a long time to come out from the dugout. And I think he should have been put on a timeout, is what the Melbourne Stars were saying. But I mean, But he obviously, is playing for the Melbourne Stars. Why were they saying that? sorry, the Adelaide Strikers, my At bad. least, हाँ, yeah. मेरे वाल स्टार बहुत स्टार आए, सिडनी स्टार है, मेलबर्न Yeah, स्टार but है. I think the captain, if the opposition captain says कि light ले लो, then light ले सकते हैं, or maybe they didn't appeal in time. I don't know, but yeah, that's a good thing. आई थिंक वो रियलाइज भी नहीं कर रहे थे ना वो टाइम पे कि उन्हें ऐसा चीज, अब ऑब्वियसली ऐसी चीज कोई करेगा तो आप कोई सा भी नुस्खा निकालने की कोशिश Yeah, करेंगे, मैं राइट. तो करता हूँ, like स्पेशली अगर मेरी टीम हार रही तो मैं ये सब मनकड़े भी कर लेता हूँ, जो भी करना है. मनकड़े का उन्हें स्टार्ट करा था ना, मनकड़े ऑलमोस्ट डरा दिया भाई था उड़ा कसम दो से. विकेट भाई. इतना डिबेट था जब अश्विन करा था, मेरे को समझ में नहीं आया क्या डिबेट था. भाई It's अब आप within देखो, the law. इतना इतना ऐसा है विद इन लॉ, अगर आप लगान उठा के देख लो, उन्हें विलेज जो रहता उन्हें टीपू को बेचारा, आउट कर नहीं देता. तो जब ही उन टीपू लोग आमिर खान टीपू को को पूरा लास्ट विकेट तक नहीं चलना पड़ता था अगर मनखेड़े अलाउड नहीं था. टीपू जाके रो लिया, और अपने अम्मा का ने टीपू जाके रो लिया. उतना इमोशन नहीं था ना 40 मिनट क्रिकेट चले में. गए गेम के वो, नहीं तो मूवी 3 घंटे की हो जाती थी, 4 घंटे की मूवी थी वो, तो बिकॉज ऑफ मनकड़े. तो भाई मनकड़े अलाउड है, ये डिबेट ही नहीं होना चाहिए. स्टे इन योर क्रीज ब्रो, दैट्स इट. नो बॉल जब डालते हैं आपको पेनल्टी मिलती, तो अगर आप क्रीज में नहीं है, रन आउट खत्म. इट्स सिंपल एज दैट. आई डोंट नो व्हाई इट इज सो मरहूम, कॉम्प्लेक्स. इन द वर्ड्स ऑफ मरून कौन है, वो ने मरून 5. नहीं नहीं, वो मरहूम, लाइक फेमस, व्हाट्स द गाइस नेम, फिरोज खान. रूल्स आर रूल्स माय फ्रेंड. तो वही छे रूल्स आर माय फ्रेंड, वही छे. चैट मिस्टर रिगार्डिंग पंत, सॉरी टकील लिव, हम ना थोड़ा एक्साइटेड हो गए मनकड़े के बारे में. मुझे पंत एज अ विकेट कीपर फ्यूचर थोड़ा खतरे में लग रहा है, क्योंकि उसके नी थोड़ा सीरियस मैटर लग रहा है. एज पर रिपोर्ट जॉइंट्स में इश्यूज चल रहा है. नहीं या एंड कीपर के थाई या नी, या बिल्कुल सही बात है. बट ये लिगामेंट टेयर, अब क्या लिगामेंट टेयर हो गया. लिगामेंट टेयर हो गया है टेकिलिस, दैट्स राइट, इट्स अ वेरी सीरियस इश्यू. बट आजकल की जो साइंस है, लिगामेंट टेयर इज अ लिटिल बिट मोर इजियर टू बी ट्रीटेड. यू कैन ऑब्वियसली गेट एन आर्टिफिशियल लिगामेंट एंड देन इट अडैप्ट्स टू योर सिस्टम. अब फिर आपको हल्लो हल्लो खोलना पड़ता. बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द ग्रेड टेयर दैट ही हैड. अब L1 है, L2 है, L3 लेवल कौन सा है वो ग्रेड का, 1 है, 2 है, 3 है, उसके ऊपर भी अपने कुछ चर्चा अभी नहीं मालूम है कुछ भी. बट होपफुली आजकल के फिटनेस जिस तरीके से है, आई एम प्रीटी श्योर ऋषभ पंत विल रियलाइज that he has to work a little harder. Strengthening है, SNC है, strengthening and condition जो करने जा रहे थे NCA obviously, but Main thing unfortunately is that he starts walking, he starts living life exactly normally and everything, and then he can like focus on the cricket and thing. Abhi सोचने का वो नहीं है. Even Nicholas Pooran had a life threatening accident and he's now keeping batting, fielding, jumping. So like I said, modern science can always change things and make it easier for a comeback. Lekin the main thing for him is to be fit and healthy, be happy with his family, take some rest and everything, and make sure he fully recovers, and then he can think about cricket. The first 2 months should just be about recovery of the body, and he shouldn't even think about cricket. I think yes, it's very 100%. difficult, but I hope that there's also mental strength conditioning, I hope, with him, along with physical, because it's not easy to just sit out. Like आपका रोजी रोटी यही है, आप रोज यही करते हैं, क्रिकेट ही खेलते हैं, right? Like, and he's been playing exceptional amount of cricket in the last 2 years. He doesn't miss a series. This was going to be like the first series he was going to miss in a long time, I feel. So for him it's not going to be easy mentally also. So I hope that he gets the right mental support as well as physical support, and the main thing is that he gets बिल्कुल मैन, that's what it is. पहले रिकवरी देखना है और कुछ नहीं.
Yes, in the BBL, Ibrahim Bhai is saying that the batsman has to step aside and bowler gets to bowl at the wickets without the batsman facing. And if the bowler hits the wicket, the batsman is out. Acha. And this happens if he comes late. So this is the timeout rule. It's not that he's automatically out. To So bowl that at the means is wicket. that he gets a free shot at the wicket. Bowl out hata basically. Doesn't get a वाह, ये रूल जबरदस्त है, ये रूल मेरे को पता नहीं था, मैं 75 सेकंड्स का पढ़ा था, बट आई डिडंट रीड द एंटायर थिंग, बट वाह, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन इब्राहिम भाई। भाई ये अलग लेवल है भाई। मगर उसका थोड़ा सा लाइक उसका मीनिंग नहीं, मतलब उसका जो पर्पस होता है डिफीट नहीं हो जाता, बिकॉज आप और 2 मिनट वेस्ट कर रहे हो बोल आउट करने के लिए, जो आपको पनिशमेंट मिल रही बिकॉज यू कमिंग लेट, एंड देन आप वो खड़े रह के देख रहे कि बॉलर कल हमारा स्टार प्लेयर, कल हमारा यूनाइटेड का स्टार प्लेयर लेट आया तो उसको एक हाफ मिस कराए थे। मगर मीटिंग में वही लेट बोल रहा हूँ, आया। हाँ उसको तो मिस करा देते, पनिशमेंट देते, तो उसको वापस भेज दो ड्रेसिंग रूम में। अगर उन्हें आके खड़े रह के देख रहा कि बॉल आउट में क्या है, या मतलब ड्रेसिंग रूम से भी देख रहा, तो फिर क्या फायदा है, लाइक Yeah, इट्स फन, that's मे बी जस्ट weird. लाइक अ फन काइंड ऑफ थिंग, बट आई फील दैट इट डिफीट्स द पर्पस, इफ यू नो व्हाट आई मीन। 100% I agree with you on that because it doesn't make sense when बैटिंग करने आ रहा, लेट होने से उसकी विकेट देने का क्या पॉइंट है, या उसको निकाल दो वापस, अगर अगर उसको पनिश करना है वापस भेज दो, बोलो यू कांट, यूर आउट। अब उसको उन्हें खड़े रह के देख रहा है भाई, उन्हें स्टंप मारा नहीं मारा, दाहिने, उसमें भी 2 मिनट नहीं तो चले आते हैं। नहीं तो दाहिने हाथ पे 5 वुडन स्केल से सब फटाफट मारो, ये क्या हाँ। है, बोल और आउट दे दे बॉलर तो के लिए उसकी भी एम्बैरेसिंग हो जाता है अगर उन्हें मिस कर दिया स्टंप्स को, वो भी प्रेशर है। वो भी प्रेशर रहता। Imagine he misses the stump and then Stoinis comes and smashes more like 7 sixes or whatever. Then क्या करते? Uh, but did it Done. happen yesterday? Yeah, it didn't happen, right? Yesterday, the ball out thing. On and I was Done, watching the game. Tekile. I will do this in the future videos to come, sir. Thank you so Yeah. much. So on day after tomorrow we'll have the. So on Tuesday we'll have the India Sri Lanka game. So tomorrow we'll do the preview, and Wednesday is the South Africa Australia. That's a dead rubber, but it'll be important in terms of WTC. And also tomorrow is the Pakistan New Zealand. So we'll discuss that as well. Basically from what we The can day see is one. Pakistan should make a few changes. New Zealand maybe get in a fast bowler in place of, I don't know, they can't replace Sadi, but maybe Wagner. The Wagner was a bit too short and too leggy for me, so I think Wagner needs some time. Maybe they just give him another chance. Based on how the pitch is, I think it will be a morning call if they'll add what's his name, कौन है वो दूसरा fast bowler, or maybe they just go with Wagner again. But if Wagner has to bowl more short balls for me to like sort of threatening short balls, well then थोड़ा because सा of बेचारा, there was a period where he was bowling so well, but in that I think he was over bowled, and his feet were swelling up, he was going crazy, and now it's just, I think that energy has been sapped out of him. But let's see what happens the next test. इज्जत से बेइज्जती होगी as per PBL rule. Yeah, वैसे ही दिख रहा, yeah. तो काइंड ऑफ स्ट्रेंज। क्या क्या होता है बीबीएल में, बैट फ्लिप्स हम लोग जो करते हैं टेप बॉल में टॉस, वैसे ही करते थे, राइट? बीबीएल में भी बीच में ऐसा फ्लिप करते हैं बैट को, बैट फ्लिप। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ, यू सी अ लॉट ऑफ स्ट्रीट क्रिकेट हैपनिंग इन बीबीएल, तो इट्स नाइस टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। Yeah, 100%. And that power surge is also there. इतने I don't चला like रहता that. है It just complicates everything. It complicates the heck out of everything, bro. No, अभी तो actually, it does. It's not that complicated. I mean, just an no, but you advantage have to to the. sit down and understand it. You can learn it, but like, why add so many rules? IPL में like impact player रखे मैं परेशान हो गया भाई, impact player है, but I think we'll get used to that impact player. It won't be that complicated. Yeah, 100%. Bolt and Jamieson not being available is affecting New Zealand. Wagner has lost pace in the last few days. That's a good call, man. Jamieson, that guy had a really good start to his career for New Zealand. I should go with Henry Nicol instead of wicket keeper batsman. Right now it's Blundell, right? Nichols, Henry Nichols, you're saying Henry Nichols. Yeah, but I think सुबह में मालूम होगा based on the pitch if it will be a bit turning or not, what they're going to do and how they're going to go. Tickner भी है उन लोगों का ने जो दूसरा fast bowler है, so maybe they could go with him. But yeah, mostly it might be the same team उसकी with बात आ जाती है one फिर, one or two team. फिर वो एक्सपीरियंस की बात आ जाती है अगर उसके साथ वैगनर हैज मोर एक्सपीरियंस एंड थिंग maybe it might just be that the spinners hold the key in this game, and if that's the case then you have Sodhi Yeah, and Ijaz Patel, Sodhi and Patel Bracewell. and Bracewell, so you have options over there. Kane Anna should That's bowl, why bro. I think Kane Anna can also bowl even on not this to, and pitch. that's why Pakistan are a bit afraid to have rank turners, I feel, because in New Zealand have options now. It's not like एक ही spinner के साथ उतरेंगे, and a lot of Sena countries, their teams have spinners now which can think. So maybe that's why they're thinking twice, but now I feel that they'll have to win the test match. A draw won't do.
So Pakistan will be hopefully will be more aggressive with the pitch and the intent, but Doesn't look खाली अब like देखेंगे. that. न्यू ईयर न्यू मी Don't होगा go for क्या बाबर look, भाई का? and please 15 ओवर में डिक्लेयर कर रहे हैं, you're not going for victory. आपको minimum 30 overs होना at least to have some sort of chance, bro. He was going with न्यू ईयर न्यू मी bro. छोड़ दो उसको. At least if you have one session, then ठीक है. But But I just hope my boy is back, man. Naseem Shah. I hope he plays next tomorrow. But I he's it looks injured, no? highly undoubtedly. You know, he came on as a sub, Yeah. so I don't know. It Good gave though. me good signs. But I love seeing his bowling. That's like And Wasim then Nicholas Junior, can be a very spin option if very he good plays in if I'm fielding. missing. He can be, and Williamson is there also. Would like to see him today. I don't know how his tennis elbow is doing. He had that injury. Maybe will that aggravate his injury? That's why he might not bowl. Guys, share your experience last 31st night. Bah! Share Fez. Fez had a much better experience because for the first time he was away from his home. He was in Dubai, and he saw a lot of things in Dubai. He saw things that he hasn't seen before, and basically it was the Burj Khalifa fireworks. It was incredible. Fez discussed that. Yeah, man, it was something else. I mean, usually where in India or at least in Hyderabad ज़्यादा नहीं करते कुछ. जाते खाली बैठक होती है, प्रार्थना करते, अरे 12 बज गया, हैप्पी न्यू ईयर, अगर करे तो करे, नहीं तो नहीं. बट नहीं, Party टेकिलिफ to भाई that was yeah. पार्टी मेरे पार्टी मेट नहीं थे, जो आपके मेरे बाजू बैठे हुए वो नहीं थे मेरे साथ. तो मैं बोला बस मैं नीचे गया. Alhamdulillah, like it's a bit close. The Burj Khalifa is close to where we live, and What a lucky guy, man. yeah. तो yeah, I mean पटाखे 3:10 पूरा काउंटडाउन हुआ, फिर LED लाइट्स पूरे अतराफ में छा गए with fireworks coming from the sides, and अतराफ पूरी बिल्डिंग में LED lights were running through the fireworks. That was adding to the whole experience. But overall जबरदस्त. फिर अलग अलग कंट्री के फ्लैग्स डाले थे, फिर थोड़े गजल्स, थोड़े I don't know क्या क्या की. They were running it across the Burj Khalifa. They were like a film, yeah, like gazelles running, zebras running. I don't know what all were running, but it was good. Apparently, yes, like Mustafa Bhai gave me this information. Me being in Dubai, I didn't know, but Dhoni and all of these guys were also here with Virat Kohli, and all of these guys were partying in Dubai. But yeah, fantastic atmosphere. लोग बहुत ज़्यादा पागल हो गए, crazy हो जा रहे थे, बच्चियाँ wild हो जा रहे थे. मेरे नजर नीचे थी, obviously. बुर्ज पे थी. But yeah, There apart was from a that, lot of जबरदस्त था. traffic, right? Lot of पूरे people. लोग भाई, पूरे लोग भाई. Usually where we stay, there's not a lot of people after 6-7 o'clock because it's a more commercial area. तो खामोश अपने घरों. यहाँ भाई 6 बजे से लोग, ऐसा लग रहा ईद की नमाज है या कोई फेस्टिवल है, ऐसा भाग रहे टुवर्ड्स बुर्ज खलीफा. फिर पूरा बैरिकेड लगा के बुर्ज खलीफा का रोड बंद कर दिए थे. You Post 7 couldn't o'clock cross a certain road. only families allowed, no individual stacks allowed. They wanted to keep it family oriented and friendly. because अपन जैसे पुट्टे गए तो छिछोरा पना करके सीटियां मार के खलीज कर देते मसले. तो yeah, they were mostly allowing families, but that also they were checking your IDs and stuff. तो मैं तो कोशिश करा भी नहीं चढ़ने की. I was just talking to the Indian people and Pakistani people who were like trying to do it. But yeah, बहुत ज्यादा public भाई. But everyone was like, the माहौल was like everybody was wishing you. मैं building में भी आया तो 4 लोग लिफ्ट में थे, happy new year कर रहे थे. And like Yeah, क्या बात है. सब लोग मुस्तफा भाई knows what kind of people live in our building. So yeah. चस्का लग गया दुबई का. अभी दुबई से नहीं निकलना है. I mean, yeah, the weather also helps, right? In these situations, the weather is so good. Like weather was very nice, but like people were partying till like 5 o'clock in the morning. Yeah, come on, man. We're in Dubai, bro. My neighbor was going crazy. कल मैच में पिच सही बना ले, बॉलर का है भाई. प्लीज प्लीज कितना मैं दुआ यही करूं. प्लीज प्लीज मैं नहीं देख सकता हूँ हर एक ड्रॉ या फ्लैट पिच. जो भी जीते भाई मैच अच्छा होना चाहिए. 3 दिन में खत्म. मेरे को एक्शन देखना है. एक्शन नहीं तो केनन्ना फिर टेंट लगा के 200 मारते भाई. केनन्ना जस्ट हंग्री फॉर रन्स. वो देख लिया मैं बैटिंग पिछले हफ्ते में. अब ऑस्ट्रेलिया भी इन्हें कोने वार्नर भी 200 मार दिया. ये बहुत देख लिया मैं बैटिंग. अभी बॉलिंग देखना है एंड टफ पिचेस देखना है. तो हाँ, टेकिलिपुर इंस्टेंट लाइव जाना था फ्रॉम दुबई. जाएंगे फैज भाई. तो देयर विल बी मोर ओकेशंस. फैज भाई इतना क्या यू आर इन दुबई या ब्रो. but yeah, no, I am in Dubai, but just need the pack to come back. Once the pack is back, and like hopefully then we can मेरा न्यू ईयर I also took a break from work and it was just I met my बचपन के 2 स्कूल के फ्रेंड्स. में अभी जिद्दा में हूँ, सऊदी अरेबिया में, where I've been born and brought up with family. तो I went to see my school friends, so we watched football and we played football. So and played a bit of table tennis and thing. So yeah, it was more of like a
that was all stag event. So it was just us guys, watching Premier League, playing some football and doing some table tennis, a bit of cricket here and there. But it was just a day of chilling, relaxing, and then we're back to work today. And it was Even more. this work, like all praises to God, like this work is also so chilling and relaxing. I mean, you get stressed by the news you read and the matches you watch, but like I it's mean, just but you great have to to discuss keep the getting sport. Yeah, information. You have to do a lot of 100%. reading and everything. Like Yeah, a yesterday, lot I of was news. watching but thoda sa kaam tha. Like we had to take notes for the Premier League and stuff. We have a Hmm. deadline show tomorrow, Chasing Green Arrows pe. So thoda bahut kaam rehta, but like it was more chilling yesterday. News is that Whoa. green pitch from what I seen today at Karachi, but it can change by tomorrow. The grass could be removed. I feel that grass is अरे deceptive. नको करो भाई यारो. मेरी बात सुनो, वो जो घास रहती, सूखी हुई घास रहती कराची में, मेरे हिसाब से अब मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा. अगर मूवमेंट भी रहेगा 1-2 घंटे रहेगा, मेरे को ऐसा लग रहा. आई डोंट थिंक इट कैन हैव अ ग्रीन टॉप लाइक दैट एंड लाइक गेट द बॉल टू स्विंग. आई डोंट नो इफ यू कैन डू दैट इन कराची. Even in India, it's very rare. Only Dharamshala, maybe Mohali, to a certain Yeah, extent. that's it. अब उसके अलावा तो I didn't. Yeah, right. Premier प्रीमियर लीग League, का क्या करना है, करने वाले हो आपके टीम्स बता दो. हमारा एक ही दोनों एक ही टीम को सपोर्ट करते हैं. हम अनफॉर्चुनेटली लोग दोनों दोनों हैदराबाद को भी सपोर्ट करते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी सपोर्ट करते हैं, इंडिया को भी सपोर्ट करते हैं, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड को सपोर्ट ओपिनियन करते हैं. ओपिनियंस दोनों के बहुत ज्यादा डिफरेंट है. बहुत ज्यादा हाँ, but डिफरेंट. yeah, I think अगर फुटबॉल देखे तो Arsenal top of the league. I'm so surprised and I'm upset, but they're playing amazing football, man, and Yeah, they're beating a brilliant. team who has Haaland, a cheat code. मतलब आप जो वीडियो गेम्स देखते खेलते थे, right? I mean अभी भी खेलते होंगे. कभी कभी ऑनलाइन आपको cheat code मिल जाता, like you can skip levels and you can like have help. You have a guide. Haaland is that cheat code. Kevin De Bruyne, Haaland, that link up everything, but it's just going out of place, man. I just feel that they're not being able to play the free flow football because they have to target Haaland, they have to feed him the ball. So it's been, I think, tough for City, but you have to give the credit to Arsenal. They're competing, and now they're favorites to win the league right now. If you go, we're almost at halfway to the season. Arsenal look amazing, man. Brighton Yeah, away I is not. think. Yeah, there are three Odegaard, Saka, and Martinelli. Yesterday also they came together. फिनोमिनल फ्लो ऑफ फुटबॉल है यार उन लोगों का. एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे. पार्टे जो बीच में उन लोगों का फिगर है इज वेरी क्रूशियल. अगर उन्हें जरा इधर उधर हो गया तो आई थिंक दे लूज अ लॉट ऑफ मोमेंटम. बट या फॉर मी ओडेगार्ड, साकिया एंड मार्टिनेली. बट अगर सिटी का अपन देख रहे हैं मुस्तफा, तो मेरे को वही लग रहा है फोर्डन नहीं खेलना इज सच अ बिग प्रॉब्लम. एंड फोर्डन केम इन द लास्ट डाइंग एम्बर्स ऑफ द गेम एंड ही वाज हैड अ वेरी बिग इंपैक्ट. उन्हें 2-3 क्रॉस ट्राई करा. जैक ग्रिलिश मेरे को नहीं समझ में आ रहा यार उसको क्या हो गया. एस्टन विला में जैसा था यार, और वी वांटेड हिम टू कम टू यूनाइटेड. आई मीन आई स्टिल वोंट माइंड इफ ही कम्स, बट अगेन विंगर है, व्हाट वी गोना डू विद हिम. बट man, the guy was something else in Aston Villa. इधर आके But I in think Villa, he beginning was not playing winger role. He was playing behind the striker. He was playing behind the the number 10 striker, role. Cam, Yeah, yeah, that is he what was playing different. that role. Yeah, okay, Pep wants him in a different. Pep is very system oriented, so you have to fit his system. I Foden agree. Like, right now too good, man. but Pep has these weird things with players, man. Foden, उसको start of the season खिलाया जबरदस्त करा, फिर उसको बिठा दिया, फिर he does weird things. I don't know. Still, I think that City have the squad depth to come back and win the league. लेकिन right now, as of now, अगर आप देख रहे हैं, Arsenal are title favorites, man, unless there's an injury or something that happens. भाई शाहरुख खान पैसे देता, बुर्ज खलीफा बर्थडे विश या दुबई अपने आप से विश करते हैं. नहीं, शाहरुख खान is the brand ambassador of Dubai tourism. यल्ला हबीबी come to Dubai, उन्हें पाकिस्तान नहीं to. देता पैसे नहीं उसको. भाई, उसको फ्री में घर दिया दुबई वाले. वहां भी पॉम ओमेरा में जहाँ टॉम क्रूज और डेविड बेकहम जैसे लोग रुके हुए भाई Because the साथ. thing is, it's about attracting the tourists and stuff as well. Right? Shah Rukh Khan is And there, the and Shah Rukh Khan is one of the like economic contributors to Dubai's like to Dubai's whatever financial status, because उन्हें जितने पिक्चर वहाँ बनाया और जितने उन्हें बॉलीवुड के चीज़ें करता वहाँ पे. आईफा also अबू धाबी में 12, फिर Shah Rukh Khan a lot of key role, and that's why they gave him a visa also for like 100 years or something. golden visa, हाँ. Yeah. मुस्तफा भाई स्विंग होगा तो सिर्फ 2 ओवर के लिए होगा, ना कि 2 आवर्स के लिए. ये ग्रास हाथी के दांत जैसा होते हैं. मैं बिल्कुल सहमत हूँ. वो ड्राई सूखी हुई घास रहती. मीन मुस्तफा भाई एंड फैज भाई को मौका मिले खेलने का तो सेम टीम वर्सेस सेम टीम का मैच खेलना पड़ता होगा. नहीं, हम लोग, मैं अलग पिक कर लेता हूँ टीम, ये वो दूसरी टीम्स है. मैं वही बोला ना, ओपिनियन बहुत अलग है हम लोगों का, बट या वी सपोर्ट द सेम टीम. बट या वर्ल्ड कप में अलग रहता है हमारे टीम्स में. सऊदी अरेबिया पसंद, नेदरलैंड्स पसंद, कनाडा पसंद, फैज को पसंद, पोर्चुगल, और ये बड़े बड़े टीम इंग्लैंड. बड़े टीम सऊदी अर्जेंटीना को रहा है भाई. सऊदी सबसे बड़ी टीम.
तो वैसा है. But yeah, that pretty much wraps it up. Any concluding thoughts? कंक्लूडिंग थॉट्स ये है, अगर प्रीमियर लीग के फैंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अब टॉटनहम का मैच शुरू होने वाला है. Yes, yes. एंड अदर कंक्लूडिंग थिंग इज गोइंग टू बी कल का प्रीव्यू बहुत मजा आने वाला है. वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोबेबल 11 जो हम लोग को लगता है कि वी विल सी ऑन 3rd जनवरी फॉर द फर्स्ट T20i. पाकिस्तान का डे 1 भी हम लोग डिस्कस करेंगे. But yeah, it's going to be all in all a fantastic show, and people who are watching us, please like and subscribe and share. जैसा किलिफ बोलते हैं, your support is valuable to us. भाई 1800 करोड़ एग्रीमेंट का क्या क्रिस्टियानो का. एंड भाई वो आ रहा है इधर सऊदी अरेबिया. मैं जहाँ हूँ अभी, मैं जिद्दा में हूँ. वो रियाद जा रहा है जो कैपिटल है, बट ही विल कम एंड प्ले हियर एज वेल. सो मार्च में वो मैच. आई डोंट नो इफ आई एम गोना बी हियर और आई एम गोना बी विद फैज. आई डोंट नो व्हाट्स गोना बी द सीन. Wherever we are, we'll definitely try to come and go and see Cristiano. But and I'll tell you something. ठीक है, now the world is going to say Cristiano Ronaldo. Like okay, he's in the Saudi league, so people might watch. Ronaldo fans will probably watch who haven't watched Saudi league before. But I'll tell you something about the Saudi league that people don't know. यहाँ पे sold out anywhere रहता भाई. It's not like Ronaldo Rendo sold out रहता. There's a Hilal versus Ittihad game on Thursday, and the tickets will be on sale tonight or tomorrow. All my friends are sitting together, and इसमें Ronaldo नहीं खेल रहा. But this is not Ronaldo's team. This is a different team from Riyadh Hilal and Jeddah team Ittihad, and it's going to be sold out like this. And the capacity is 80,000, 90,000. Zabardast new stadiums आगे. हम लोग की किस्मत थी people watching के हम लोग एक बार इत्तेहाद नाहली के मुस्तफा भाई took me to that match. And what an atmosphere भाई. वो ऐसा atmosphere आपको नहीं मिलता. तो basically कैसा है, it is the richest versus the rags, like गरीब अमीर वाला मैच है. Ahli is like a laboristic kind of a club, right? But I think less popular, but we were supporting them. Lekin the thing is, if you look at it also, and in the Saudi league also, if you look at you're talking about the atmosphere and everything. Also in the Middle East, Saudi is the most popular league. So अगर दुबई में, Egypt में सब Saudi league देखते हैं. Like if you go to the cafes and everything, you have Saudi league, so it's very popular in the Middle East. But of course, it doesn't have the global reach of La Liga, Italian. But you have a lot of loyal supporters and a fan club. You have and a lot everything. of loyal supporters. A lot of loyal supporters. यहाँ पे है, आप game जरूर देखना. And a lot of people were surprised, but that is the case. Like I'm going to try and go to a game before I leave. If I can do that, then I'll show you guys videos and stuff on Twitter. But it's incredible atmosphere, and it's always good. Look, now more people should watch because look, they beat Argentina, so there are a lot of talented players, and hopefully more players will come and make it a more global league. But if you look at it, like the stadiums are packed, and it's good. It's not the level of football that you're expecting, high level, but it's good football. It's good football to watch, and the fans are phenomenal, yaar. The fans are exciting, energy, भाई. आप क्या बोलते हैं, अपने drums ला लेते, पुकारा करते, हल्ला करते, just like to have fun. Then they say, where is Messi? Where is Messi? ऐसे चीज़ें पूरे करते, मस्खरे हैं यार. आखिरी Saudis are like one of the best fans to go out and watch a match with. We went, we saw people fighting and arguing, but then at the end of the day, they were dancing together and having like chants. पूरा जबरदस्त माहौल था यार. टैकी रिवर है अपना तो 100 जन्म जाएगा इतना पर एनम पैकेज में. सर भाई आप सऊदी से लाइव हो क्या? हाँ जी, मैं सऊदी से लाइव हूँ फिलहाल अभी. तो लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग, रोनाल्डो इज कमिंग टू एन ऑलरेडी already loyal fan base and very kya bolte, so exciting kind of scenes in the stadiums. It'll always be full. The only thing now is that for Al Nassr, which is a Riyadh club, the tickets will be more expensive than Ronaldo's, because there'll be much more demand and more people. Yeah, they have to take out that 250 million. So they're going to increase the rate and everything. The tickets will be more expensive. There'll be shirt sales and everything. Lekin the stadiums are always full, man, in these games. Like especially when you have the big games, they're always full. That's one thing. I think that wraps it up. Tomorrow we'll get you the preview for India, Sri Lanka. We'll talk about Pakistan, New Zealand a bit as well. But the focus will be on the predicted 11s, how Hardik Pandya is going to lead the side. I haven't seen his press conference. I don't think it's out yet. So when it's out, then we'll watch that and then give our reaction to the press conference. Make sure you like and subscribe and jude hamare sath hopefully tomorrow. Hopefully at a similar time if we can, and we'll let you know on Twitter, Instagram what time we're coming on, so please do join us. Guys, nice to talk to you. We'll see you tomorrow. Till then, goodbye, take care, Allah Hafiz. Aapko bhi take care. Thank you so much.
Tekile, for joining us, and thank you to everybody who joined us today. It's been yeah. If we haven't if you weren't able to comment, do comment in the on the YouTube channel as well. We can answer your questions there. You can message us on Twitter and Instagram. Until next time, take care. Happy New Year to everybody. Stay safe and take care of yourselves. And looking forward to all the sports. Have a good one. Good night.